Assalamualaikum. Welcome to a very very special episode of the Pakistani Experience. because मैंने दुनिया भर से अपने फेवरेट लोगों को इकट्ठा किया है बातें करने के लिए. क्या मैं इनका तारुफ कराऊं, क्योंकि ये खुद अपना तारुफ करा सकती हैं. सबसे पहले हमारे साथ ऑल द वे कनाडा से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मिनाइल ने, जिन्होंने मुझे मना किया था कि इनको ना बोलें, लेकिन आई लाइक टू शो ऑफ दैट माय फ्रेंड्स एट दिस स्कूल, मास्टर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड, पीएचडी कर चुकी हैं, अब पढ़ा रही हैं. प्रोफेसर डॉक्टर मिनाइल, हाउ आर यू? और कुछ मैं भूल गया हूं तो प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लें. आपने मुझे बिल्कुल ठीक इंट्रोड्यूस किया है. मेरा नाम मिनाहिल है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा में एजुकेशन की प्रोफेसर हूँ. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. और ये मैं रिकॉर्ड करनी मैंने शुरू की तो मुझे लगा था मैं क्लास ही पढ़ाने लगी हूँ अपनी, लेकिन क्योंकि सारा पिछला साल जूम पे गुजरा है. बट नो, वेरी हैप्पी टू बी हियर. प्रे मेमन को आप लोग सब जानते ही हैं, सो प्रे मेमन प्लीज अपना तारुफ करा दीजिए. Okay, my name is Preh Memon. I operate a little Easter egg Instagram profile that is only up for people to find on their own. But aside from that, you make it sound like I only fans चला रही हैं. Seriously, नहीं, उसकी identity को मैं बहुत jealously guard करती हूँ, and I like to keep it that way. But other than that, I've been working for Pakistan's corporate sector for the better part of nearly a decade now. Yeah, that's mostly it. I like to comment on what's going on in Pakistan and hopefully create a more well-informed electorate in the process. इतने पढ़े लिखे और ऑसम लोग आते हैं ना, तो फिर मुझे इनसिक्योरिटीज हो जाती है, इसलिए मैं प्रे जैसे लोगों को बुला लेता हूँ और लॉट मोर ब्रिलियंट देन मी एंड कंडक्ट द डिस्कशन व्हिच इज लॉट मोर एजुकेटेड. मैं तो फार्ट जोक्स करता हूँ जिसमें मिनाइल को हंसी आती है रन करते हो. एंड अगले गेस्ट तो वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन उनका एक सीक्रेट हम आज पब्लिक करने वाले हैं. नायाब गौहर जान, लेफ्टिस्ट, फेमिनिस्ट, ऑर्गेनाइजर एंड नाउ अ मेंबर ऑफ, वो खुद बताएंगी. कैसी है नायाब आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. इतना कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है. मतलब सो माय नेम इज नायाब जान एंड पिछले कुछ सालों से मैं एक सामाजिक कारकुन की हैसियत से काम कर रही हूँ मुख्तलिफ जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनके साथ. और अभी हाल ही में मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, तो आई एम अ वर्कर एंड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. Pere, I think as Sindhis we should welcome her in tradition. Definitely. But by the way, I have to say, is that not the best political anthem ever? It is. For sure. आज का पॉइंट ये है कि डिफरेंट वेंटेज पॉइंट से जरा चीजें डिस्कस की जाए, पॉलिटिकल रिफॉर्म डिस्कस किया जाए, मुल्क के हालात डिस्कस किया जाए. क्योंकि नायाब एंटिसिपेट कर रही हैं तो पहले इन्हीं से डिस्कशन शुरू करते हैं एंड देन whoever wants to jump in. Why नायाब हमने अपनी लेफ्टिस्ट बहन को पीपीपी को रुखसत कर दिया है अब? why did this decision happen? आपके भाई लेफ्टिस्ट हैं, आपके वालिद बागी हैं, आप एक मेन स्ट्रीम पार्टी ज्वाइन कर ली आपने लेफ्ट का हाथ छोड़कर, क्यों? नहीं, पहले मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लूं. मेरे वालिदैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स रहे हैं पिछले 40 सालों से. और मेरे वालिद साहब ने मैं बागी हूँ जो है वो भी भुट्टो साहब के लिए लिखी थी. और उसको फेम एक्चुअली तब मिली थी जब मोहतरमा ने I believe it was 1988 जिसके अंदर उसको रिसाइट किया था, और 1986 I think. So they have been political workers of the party. They've not been formal उस तरह से in public life, or what you would call politicians, but they have been political workers for the party and ideological workers of the party for the past 35-40 years. So बेसिकली मेरे ख्याल में यही रीजन है कि मुझे ये लगता है कि not that this is in disrespect to anybody who chooses to continue working outside of the system. I think कोई भी सही या गलत तरीका इसमें नहीं है, लेकिन क्योंकि पिछले चंद सालों से मैं एक सामाजिक कारकुन की हैसियत से काम कर रही थी, तो मुझे उसमें बहुत अप्स भी थे, डाउन्स भी थे. और मुझे जो मेन उसके अंदर एक चीज लगी कि एक्सेस का मसला होता है, और ख़ास तौर पे जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब आपके पास एक्सेस हो, जब आपके पास कोई ना कोई पावर हो टू चेंज समथिंग, तो आई थॉट कि इट्स बेस्ट इफ आई
decide to take the same belief system with me and enter politics. And why Pakistan People's Party? Because I personally think कि कोई भी जो progressive इंसान है, खास तौर पे जिसके लिए ख़वातीन के हुकूक और स्टूडेंट्स के हुकूक और माइनॉरिटीज़ और जनरली जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो I think there's absolutely no other option. Preh, do you want to say something? आपके your dad almost lost his life standing next to Benazir. As somebody who comes from a PPP family and not a PPP supporter yourself, do you have a counterpoint or do you have a question for Nayab? No. I don't have a counterpoint because I don't want to. I don't believe in attacking someone for what their belief systems are. I do understand the decision. मजा कहाँ आएगा यार? फिर फायदा बंद कर. अच्छा बात करने तो दो ना एक second. I think in terms of ideology, personally also, I think the party that speaks to many of us in our circles is probably the Pakistan People's Party. From an ideology perspective, at least, it's bang on, right? It's leftist. There's a lot of progressive stuff happening. In terms of the kinds of news stories also that you hear about the People's Party, agar main is saal ko hi utha दूं, we have a quota for transgender representation in the public sector. We have the reopening of student unions, which are an important part of democratic grassroots organizing and mobilizing grassroots democracy. So in terms of the ideology or the political philosophy, it's bang on. Like I completely get the decision. मेरा जो challenge आता है वो usually आता है at the implementation level, and I think that how do you manage to get past those barriers? So I think very valid questions. So मेरे ख्याल में जिस सोच से मेरा ताल्लुक है वो थोड़ा सा, मैं अगर उसका पस मंजर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर आपको बताना चाहूँ, मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर तरीके से कभी भी सियासी जमातों को काम करने का मौका नहीं दिया गया। अभी भी जो हम अपनी अगर सियासी तारीख देखें तो जिस तरह से इंटरप्टेड पीरियड्स ऑफ डेमोक्रेसी आते हैं with prolonged periods of dictatorship and then very recently hybrid sorts of systems and everything. So I think जो मेरे ख्याल में अगर आप उसकी पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर अगर कॉन्स्टेंटली अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही हैं, कॉन्स्टेंटली उनको तोड़ा जाता है, उनको वीक किया जाता है, बहुत सारी उनकी लीडरशिप मतलब बहुत सारी पार्टीज, खास तौर पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप छीन ली गई, मतलब 2 चेयरपर्सन उनके जो हैं वो असैसिनेट हुए। तो मेरे ख्याल में ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये लगता है कि जैसे ग्राउंड maybe whether it's policy making or policy implementation, I think there's a misconception that political parties and their representatives enjoy a lot of power when it comes to implementing those policies. I think एक तो perpetual जो है वो flux और insecurity है, और साथ ही साथ बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ मिलके चलना पड़ता है। तो मुझे ये लगता है कि जब खुद से इस वक्त पार्टीज ही जब एक सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो साथ ही साथ हम देखेंगे कि थिंग्स विल टर्न अराउंड। आई थिंक वीव ओनली प्रीटी मच सीन 5 to 10% of what political parties can actually do and deliver. So fair point, Nayab, and the 2 chairpersons की बात है, I 100% agree. I don't think any other political party or political entity would have survived having lost 2 charismatic, popular chairpersons. जो खान साहब का नैरेटिव है कि जी 40 साल से जरदारी नवाज शरीफ मुल्क खा रहे हैं, वो तो फैक्चुअली स्टैंड अप नहीं करता। ज़ियाउल हक के बाद से सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी आई थी, अब जाकर 2008-13 वाले जब एक सिविलियन ट्रांसफर हुआ, उससे पहले तो कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। इतना मुश्किल था पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। दैट बीइंग सेड, सिंध में हम कह दें ठीक है, तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, रिसोर्सेज कम है, इसलिए नहीं प्रोग्रेस हो रहा। बट इवन अगर हम फिलोसॉफिकली बात करें, पीपीपी हैज अलाइंड इटसेल्फ विद फ्यूडल्स। पीपीपी फ्यूडल्स को टिकट देती है, फ्यूडल्स वो रन करते हैं, एंड देन पीपीपी क्योंकि इन पावर में है, फ्यूडल्स को फ्री रेन होता है कि वो जो अपने इलाके हैं वो जिस तरह रन करना चाहें वो करते हैं। वुड यू से ये पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ये है, गलत फिलॉसफी है, चेंज होनी चाहिए, या इज इट जस्ट द रियलिटी ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? No, I also think confusion in terms
of what you define as feudal, मुझे तो लगता है कि जो हमारा एक urbanized context है उसके अंदर जो रूरल पॉलिटिक्स है उसको समझा ही बहुत अजीबोगरीब तरीके से है कि अगर कोई गांव है और वहां पर डेफिनेटली एक पावर स्ट्रक्चर है ऐसा कि देयर इज वन पर्सन हु हैज power over land, and with that there comes associated political power as well. But जिस तरह से urban gentry हमारी इसको देखती है वो तो बिल्कुल जैसे वो कार्टून था, अभी आपने लोकल बॉडीज के इलेक्शंस के बाद वो कार्टून देखा होगा जो एक इंतहाई रेसिस्ट और फजूल किस्म का कार्टून था, और बहुत सारे फिर पीटीआई सपोर्टर्स भी इस तरह की बातें करते हैं कि ये तो गधे हैं, ये तो फलाने हैं। प्लीज ऐसे सोचना बंद कर दें। अगर बार बार लोएस्ट लेवल के ऊपर भी एक सियासी जमात को वोट्स मिल रहे हैं, and this is not just, we're not just talking about the candidates who belong to feudal families. अभी आप बलदियाती के अंदर देखें तो बहुत सारे political workers को भी टिकट्स मिले हैं वहां पर, वो भी इलेक्शन जीतते हैं वहां। तो मान लें कि the Pakistan People's Party is a popular political force in Sindh, and there are reasons for that. The one reason is that in a lot of cases they have delivered a lot of public goods, particularly in the area of health. I think Pakistan People's Party की जो services हैं वो unparalleled हैं। बट साथ ही साथ ये भी देखें कि जो लोग ये एतराजात या ये सब कुछ करते हैं, क्या उन लोगों ने सिंध के अंदर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश भी की है? ये खान साहब के सपोर्टर्स जो कहते थे कि कैसे जीत गए बलदियाती ये वो, आपने तो पूरी सीट्स के ऊपर कैंडिडेट्स भी नहीं रखे और बात आप क्लीन स्वीप करने की करते थे। तो काम करना पड़ता है। पीपल्स पार्टी के लोकल नेटवर्क्स हैं वहां पर, बहुत सारी चीजें हैं। सो आई थिंक दिस urban myopic view, in my opinion, I think it holds little weight. It reduces people to, like they say, donkeys and whatnot. It takes away their agency. अगर हम अर्बन मायोपिया की बात कर रहे हैं, Minahil, I'd love for you to get into the discussion. एक PMLN को आपने 2 इलेक्शन में सपोर्ट किया, एक जनरल परसेप्शन, एंड शायद जो पंजाब में लोग सुन रहे हैं नाराज हो जाएं, पंजाब वालों जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी को पाकिस्तान नहीं समझ में आता, पंजाब वालों को कराची से नहीं समझ में आता। आई कीप हैविंग दिस फाइट विद पीपल इन लाहौर who can just view MQM as a terrorist party, and I'm like, नहीं, it's not like MQM held Karachi hostage and they were a terrorist party और लोग फिर भी वोट देते थे। एक multifaceted explanation है इसकी, but that's a separate discussion. But growing up, Minahil, what would you say कि did you have any perceptions about PPP? Because I feel like especially पंजाब में post बेनज़ीर, एक बेनज़ीर का support था, वो पंजाब में तो PPP exist नहीं करती, especially ज़रदारी की पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं exist करती। Did you have certain perceptions, and then once you did the work, went around Punjab, as you researched and evolved, do you feel like some of those perceptions were challenged? What was your journey like with these perceptions of PPP? Yeah, that's a really good question. मुझे तो शहजाद बहुत मजा आ रहा था। मैं तो आपके एक पॉडकास्ट की लिसनर की तरह बस सुन रही थी इन दोनों को, और मुझे था ये चल पूरा इस तरह 1.5 घंटा गुजर जाएगा और मुझे ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। The truth is, yes, मैंने 2013 में PMLN को वोट दिया था और 2018 में भी दिया था। अब जो है वो मैं बहुत साल हो गया मैं आपसे पाकिस्तान से माफी बाहर। मांगना चाहूंगा, मैं 2013 में मुझ पे यूतियापा छाया हुआ था, मैंने आपको काफी पटवारी बोला, मुझे माफ कर दीजिएगा। Listen, Shehzad, you have such a dark past. Oh my God. Dark present also, Nayab. मैंने तो अगर दिया भी होता, honest to God, मैंने PTI को वोट दिया भी होता तो मैं इस पब्लिक फोरम पे कभी ना एडमिट करती। You're very brave for admitting it. Well, since he's done it, I would also like to buy into this. Even मेरे ऊपर भी बहुत जोर से छाया हुआ था। In fact, मैं कराची से 4 घंटे ड्राइव करके गई थी सांगर डिस्ट्रिक्ट, और वहां पे शायद 1 डजन वोट्स भी नहीं मिले थे पीटीआई के उम्मीदवार को, लेकिन एक आपकी बहन ने दिया था। वाह। मैं बाहर, बिकॉज मैं लम्स में था, मेरा जो वोटर रजिस्ट्रेशन आया उन्होंने नहीं करवाया, तो MQM वालों ने मेरा 9-0 में वोट रजिस्टर करवा दिया था। मैं 9-0 हो गया था और मुझ पे लोग हंस रहे थे कि तू यहाँ क्यों वोट देने आया है, एंड दे ऑलमोस्ट ट्रीटेड माय वोट एज अ जोक के जा बेटा तू वोट देकर आ। बट होता है यार, यूतियापा अनोनिमस एक सपोर्ट सर्कल है जिसका प्रे और मैं पार्ट है। हम लोग 2013 में तो मतलब बहुत फनी था, बिकॉज मेरी
मैं डीएचए में, मेरी फैमिली डीएचए में रहती है, तो वहां पे जो ख्वाजा साद रफीक की वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो इवेंचुअली ही वन इन 2013, बट आई वाज प्रोबेबली द ओनली वन इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी हु वाज देयर वोटिंग फॉर हिम। बाकी सारे ही पीटीआई के थे। पीटीआई की आंटी थी, मेरे अपने ससुर ने पीटीआई को वोट डाला और वो बहुत मेरे से नाखुश थे, और तब मेरी बिल्कुल नई नई शादी हुई थी, और मुझे याद है डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस यूज्ड टू बी वेरी टेंस के बस। खैर मेरे अपने हस्बैंड ने भी उसी को वोट, पीटीआई को वोट दिया था, मैं किसी दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें शहजाद ये बहुत अच्छा सवाल है। तो मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। आई जस्ट बीन अ वोटर, दैट्स द एक्सटेंट ऑफ माय पॉलिटिकल एजुकेशन एंड एफिलिएशन। लेकिन मैंने पंजाब ब्यूरोक्रेसी के साथ काम किया स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एज आई यूज्ड टू वर्क देयर। 1 साल मैंने कॉन्ट्रैक्चुअली काम किया था उनके साथ। उसके बाद मेरी पूरी पीएचडी रिसर्च भी ब्यूरोक्रेसी के साथ ही थी, और मैंने मतलब सारी आई हैड द प्रिविलेज टू ट्रैवल थ्रू आउट पंजाब। तो अगेन मेरी पॉलिटिक्स और मेरी समझ जो है वो सारी बहुत ही पंजाब स्पेसिफिक है। तो जो आपका सवाल था ओरिजिनली के मेरे पीपीवी के बारे में क्या ख्याल आते हैं, उसमें से आई थिंक एक तो मतलब जो कंटेंशन बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मतलब जिसके बारे में इतना बात नहीं की जाती, वो यही है कि जो मेरे बहुत ओवर प्रोग्रेसिव सर्कल्स में बात की जाती थी कि मतलब एमडीओ को तो नॉन मुस्लिम फिर इन्होंने ही डिक्लेयर किया ना, मतलब गलती तो इन्हीं से हुई। तो वो हर बात आके इधर ही फंस जाती थी, इससे आगे कभी कभी बात जाती ही नहीं थी। लेकिन अगेन जहां तक जो द थिंग्स दैट शहबाज शरीफ टेक्स प्राइड इन की डिलीवरी हो रही है और काम हो रहा है, तो वो मैंने अपने पूरे थ्रू आउट द टाइम दैट आई वर्क विद देम मैंने वो देखा है, फर्स्ट हैंड देखा है। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ। एक ये कि मैं पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड जो कि ये सिलाई कढ़ाई और इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो उसका एक प्रोजेक्ट मैं करी थी जब मैं लाहौर में थी। तो हम काफी मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा काफी ट्रैवल मैंने किया। तो अब वहां जाते थे तो आप देखते थे कि टेक अप नहीं हो रहा, औरतें जो है ये कोर्सेज नहीं ले रही, इतनी चीजें ऑफर हो रही हैं। बट फिर आप जब वहां पहुंचते थे तो यू आस्क द पीपल जो वो कोर्सेज ले रहे थे, तो व्हाट वर देयर रीजंस फॉर टेकिंग अप दोस कोर्सेज। तो इतने सारे लोग हमेशा कहते थे कि जी सड़कें बन गई हैं, आसान हो गया है, सड़कें बन गई हैं, आसान हो गया है अब हमारे लिए अपने गांव से कहीं जाना। तो जब मैं ये सुनती थी और फिर नैरेटिव पूरा ये होता था कि ये तो सिर्फ सड़कें बनाती है, नून लीग तो सिर्फ इनका तो काम ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैं देखती थी कि व्हाई इज दैट अ डिस्कनेक्ट, मतलब उसी की वजह से और कितनी चीजें हो रही हैं इन सड़कों की ही वजह से। सो आई थिंक दोज वर माय रीजंस. Can I just add in that from an economic perspective, sadkein are hugely important because they're considered a part of essential infrastructure, and because they bring down the cost of your transportation and your logistics, they add directly to productivity. So अगर नून लीग ने सड़कों पे invest किया है तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. Bad example, but Hitler. I mean, हाँ मतलब Autobahn was essential for Germany's development. बाकी तो जल्लाद आदमी था, but Autobahn was great. राइट. तो आई थिंक मतलब इस तरह की कुछ पहले पीटीआई अब हिटलर. प्रोग्रेशन सही है ना, कैटेगरीज तो वही है. It makes sense. Yeah. इमरान खान was a gateway drug till Hitler for me. अगले इलेक्शन में मैं मोदी को वोट दे रहा हूँ. आई थिंक आई शुड. हर जगह से कैंसिल होने वाला हूँ मैं इस पॉडकास्ट के बाद. मिनाइल प्लीज कंप्लीट. सो आई थिंक मतलब जो मेरा दूसरा एग्जाम्पल था वो ये था कि मैंने अपनी पीएचडी रिसर्च शुरू की तो 2013 से 18 के दरमियान बहुत आसान था मतलब एक्सेस करना बहुत चीजों को, थ्रू द गवर्नमेंट, थ्रू द ब्यूरोक्रेसी. पीपल वर वेरी फोर्थ कमिंग कि आप आए हमारे साथ रिसर्च करें. बल्कि एक फॉर पीपल योर लिसनर्स इफ दे आर इंटरेस्टेड, एक जिष्णु दास he's an economist. He was based at the World Bank. अब Georgetown में होते हैं. He's one of the big people who worked in education in Pakistan. उनकी एक टॉक है जिसमें he shows this slide के पाकिस्तान वो एक एग्जाम्पल मुल्क है जहाँ पे हर रिफॉर्म ट्राई हुआ है. पंजाब में जो दुनिया का जिस किसी ने भी, कोई इकोनॉमिस्ट हो गया, सोशियोलॉजिस्ट हो गया, कोई रिफॉर्म करना चाहते हैं, पंजाब ने वो सब ट्राई किया है. सो अगेन
mostly unsuccessful for various reasons, and we can get into those. But this appetite for research and trying new things was very much there between 2013 and 2018. उसके बाद से ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और लोगों का मुझे नहीं पता, बट इतना सब कुछ क्लोज्ड हो गया कि मुझे 2 प्रोजेक्ट्स अपने रिट्रैक्ट करने पड़े फ्रॉम द गवर्नमेंट, और प्राइवेट स्कूल्स के साथ काम करना पड़ा, क्योंकि इट वाज जस्ट इम्पॉसिबल टू गेट थ्रू टू एनीबडी इन द ब्यूरोक्रेसी. कोई हाथ ही नहीं पकड़ाता था. कोई कहता था कि नहीं, हम पे तो नैब का छापा पड़ जाएगा, या हम पे तो ये हो जाएगा, हम पे तो वो हो जाएगा, हम तो करना ही नहीं चाहते. सो देयर वाज very little innovation in that respect that I felt was happening in Punjab bureaucracy. I don't know if that Minahil, if I just get you to add on this, because again लोग हर पर्सपेक्टिव से सुनते हैं. हो सकता है कुछ लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और वो आपको देखकर उनको ये ताज्जुब हो रहा हो कि ये PMLN की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, यू weren't working with PMLN, पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम कैसे कर रही थी. हम लम्स में थे, हम I did Fulbright, so we've sat in those circles where we meet people and we know the work they're doing and the kind of people who work. But एक general perception है कि PMLN अगर है तो हर डिपार्टमेंट में पटवारी ही होंगे. आई एम यूजिंग देयर लैंग्वेज, डोंट कैंसिल मी फॉर दिस, बट डग्गे, पेंडू और इस तरह के लोग हर जगह होंगे. वेयर एज आई हैव सीन, आई हैव फ्रेंड्स, यू हैव फ्रेंड्स, वी नो पीपल हु आर ब्रिलियंट PhDs, Ivy Leagues, who are working in these departments. So would you like to say something or share some experiences to destroy this notion कि PPP और PMLN अगर गवर्नमेंट में आ गई है तो बस ये गाँव से अनएजुकेटेड लोग हर डिपार्टमेंट में भर देंगे जो सिर्फ पैसे खाएंगे. लेकिन शहजाद, अनएजुकेटेड पंजाबी बोलने वालों को कहते हैं, किसको कहते हैं अनएजुकेटेड? यही तो बात है ना. मतलब उस तरह तो मेरे भी लहजे, मतलब मेरा बहुत, आई हैव अ वेरी पंजाबी ट्वैंग टू माय इंग्लिश आल्सो. तो वो तो फिर मुझे भी कहते हैं कि ये वाकई पटवारी, अगर इफ दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पटवारी, क्योंकि वो अनएजुकेटेड तो नहीं है. मतलब उनमें से सब लोग पढ़े लिखे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, यूनियन काउंसिल लेवल पे काम कर रहे हैं, इतने सारे. अब जिस तरह मेरी रिसर्च एजुकेशन में है, तो एजुकेशन में गवर्नमेंट वो ब्यूरोक्रेसी, सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी के मॉनिटर्स होते हैं. सो हर उनका काम होता है 3 स्कूलों में जाकर रोज मॉनिटर करना, देखना कि बच्चे कितने आए हैं नहीं आए. पब्लिक स्कूल पंजाब में मेरे ख्याल से 60,000 पब्लिक स्कूल्स हैं. तो अब वो सारे, मतलब जाहिर है कुछ उनमें से रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स है, मतलब नॉट जनरल्स वी डोंट टॉक अबाउट, बट जो मतलब लोअर रैंक ऑफिशियल्स रिटायर कर गए हैं और ये काम कर रहे हैं. और वो सब पंजाबी बोलते हैं, वो सब एक मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, रोज सुबह आते हैं दिहाड़ी पे और चले जाते हैं. नॉट टू से कि बहुत सारे हैं जो शर्क भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम अपना नहीं भी कर रहे, लेकिन मतलब बहुत सारे लोग जिस तरह नौकरी हर जगह होती है उसी तरह ही कर रहे हैं. सो मुझे नहीं पता कि मतलब क्या है इस बात का. Preh, you wanted to weigh in? No, I completely agree. So when I started working, भेज दिया था साल का, not just a PPP family but also a very hardcore Sindhi family, जिन्होंने कभी शायद सिंध पाकिस्तान के बाहर कदम रखा होगा जरूर, लेकिन सिंध के बाहर नहीं रखा. तो वहाँ पे when I got there and I saw that Sahiwal is probably not what you would call a top tier city in Punjab. It's probably like tier 2 somewhere there. लेकिन मैं घर आई, मैंने बोला कि यार ये तो आपके हैदराबाद से भी ज्यादा अच्छा शहर है, तो आप लोग क्यों कहते हैं PMLN को ये और वो. And I was actually very deeply impressed with the organization of the city, because for me as someone who works within an economic and because there is a stark difference between the infrastructure that we have in Sindh and the infrastructure that you see in Punjab. Uski wajah se then that kind of bleeds into your own understanding of, okay, here are 2 different political parties, they both sort of also appeal to a certain ethnic group, lekin one party has been able to at least create and build essential infrastructure, not just, by the way, roads and sadkein, LNG terminals, ye sari jo cheezein jab prime minister the Nawaz Sharif, unhone sari lagayi hai, power plants banaye hain, he came in with a mandate of power and he delivered on it to a certain degree. Ab power structure ki other challenges notwithstanding, you can see that there is a certain thought and there is a certain administrative excellence, I would say, that you see that has become kind of like the hallmark of PMLN, which they keep cashing on. Us sense mein, jo People's Party ka performance raha hai, it hasn't, perhaps it's a marketing thing, it could be, it to some degree it probably is, but in terms of that executional excellence, you don't see it as much.
And that's something that is a little harder for me to understand, which is why I would love to hear. My father, for example, he's a doctor, he works in the public sector. ये जो नायाब ने बात की है, I have heard this repeatedly and I have seen it and witnessed it, that the work that the Sindh government has done for healthcare is unparalleled, perhaps compared to previous governments and perhaps also compared to other provinces, because हमने जाके देखे हैं जो NICVD setup हुए हैं सक्खर, लाड़काना, घोटकी, people used to have to travel all the way to Karachi from Sakkar, कोई 8-9 घंटे travel करके आते थे for cardiac emergencies. You can imagine what the success rate of them actually getting good treatment was. Now those centers are available there. The doctors that they've employed there have gone from Karachi. They're routinely out back. They've created an infrastructure that is very conducive to the rural population of that area being able to access healthcare. That's a success story. लेकिन मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मेरे अबू डॉक्टर हैं और वो मुझे बताते हैं, लेकिन मैं अगर ये बात जाके किसी और के सामने कहूँ तो they're just like, what success? What is NICVD? They have no idea about it. Part of it is marketing. The other part is how effective that those success stories are and what we can do to bring them out there. Nayab. Yeah, absolutely. So I think दो-तीन इसमें चीजें हैं. I'll go back to a couple of points that I wanted to address. एक तो this idea that the Pakistan People's Party is nowhere to be found in Punjab. I think that too is coming from a very central and northern Punjab perspective. तो मेरे ख्याल में इसको भी अगर हम थोड़ा सा न्यूआंस के साथ देखें तो जो हमारी साउथ पंजाब की बेल्ट है, जो सराइकी बेल्ट है, उसमें अभी भी चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, राइटर्स हों, पोएट्स हों, लेबर यूनियंस के लोग हों, फार्मर्स यूनियंस के लोग हों, और ordinary voters, even students, there is a lot of People's Party is still quite relevant when it comes to certain areas in Punjab. So I think when we say Punjab, we need to be a little bit more careful कि हम पंजाब के किस हिस्से की बात कर रहे हैं. Of course, central Punjab में जाहिरी सी बात है, there is no question कि the dominant party for a long time now has been the PMLN. So that's the first thing. I think a related point, इसी से related, और प्रे जो कह रही थी, मैं उस पर थोड़ा सा build on करना चाहूंगी कि जो सस्पिशन, और एक तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो प्रोपेगेंडा और जो वो सारा किया जाता है सियासी जमातों के खिलाफ, वो तो ओवरऑल ही अभी आप लोग जो गिनवा रहे थे चीजें PMLN के बारे में, जो PTI सपोर्टर्स हैं या जो कुछ इस तरह का ग्रुप है जो सिर्फ चोर डाकू करता है, वो भी नहीं मानेगा, राइट? तो वो इन चीजों को भी कहेंगे कि ये क्या किया है, खा गए, इसमें से ये भी खा लिया होगा, ये भी खा लिया होगा, ब्ला ब्ला ब्ला. सो जो सियासी पार्टीज की अचीवमेंट्स हैं उसकी रिकग्निशन का ओवरऑल मुल्क में एक मसला है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक ब्रोकन सिस्टम है, ब्रोकन डेमोक्रेसी है और वो सारा. बट देन आई वांट टू टॉक अबाउट द थर्ड थिंग व्हिच इज आल्सो विजिबिलिटी, राइट? Punjab of course has been the most important, visible, powerful, the power center in Pakistan. तो इसमें रिसोर्स डिवीजन भी जो आती है वो भी आप देख लें कि किस तरह से ऑफ कोर्स पंजाब सेंट्रिक होती है, और साथ ही साथ विजिबिलिटी का जो इशू है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि वो शायद ऑफ कोर्स हो सकता है कि पार्टीज की तरफ से भी मार्केटिंग का या उस तरह से कोई उसमें कोई कोताही रह गई होगी, लेकिन हर पार्टी PTI की तरह नहीं होती कि वो सिर्फ पूरा टेन्योर जो है वो सिर्फ मार्केटिंग में ही लगा दे और नीचे करे कुछ ना. जो लोग एक्चुअली काम कर रहे होते हैं शायद फिर उनके पास थोड़ा टाइम कम होता है इस तरह की चीजें करने का. ये मैं अंडर वैल्यू नहीं कर रही मार्केटिंग और प्रोजेक्शन और सोशल मीडिया को. सेम इंसान होता है, डिफरेंट टीम्स होती है, ये कोताही है मान ले. PPP PMLN इवन बेटर, PPP तो स्पेशली मार्केटिंग सोशल मीडिया गेम है ही नहीं. बिल्कुल करेंगे, मतलब उस पे I think there's a realization that this needs to be done. I'm just saying that the bar that PTI has set is something very unrealistic because they had मतलब बहुत कुछ था, एक सेटअप भी उनको दिया गया था और उसमें बहुत एक प्रोपेगेंडा मशीनरी भी है, और जो टॉप टियर लीडरशिप है उसका फोकस ही जो है वो सिंगल हैंडेडली इन्हीं चीजों के ऊपर था, क्योंकि काम वाम तो वैसे ही इतना ज्यादा वो नहीं करते थे.
सो आई थिंक डेफिनेटली विजिबिलिटी के हवाले से भी है, सिंध के बारे में सिंध को स्टीरियोटाइप भी बहुत किया गया है, इस बात को मैं मानती हूँ कि स्टीरियोटाइप से लड़ना चाहिए, काउंटर आपको अपना काउंटर फैक्चुअल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अगर अभी आप देखें तो मेरे ख्याल में जिस तरह अभी जो बस सर्विस लॉन्च हुई है कराची के अंदर, सो आई थिंक आई थिंक इट्स वंडरफुल एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट is also capturing attention, just like the way that healthcare services in Sindh do capture attention. और वही बात है, लेकिन देखिए ये again 2022 we should not be celebrating a bus service in 2022. ये तो फिर नहीं, लेकिन शहजाद, हाँ नहीं, लेकिन एक चीज है, you know, in a country, in a city that is such a severely lacking public transport system, I think we must celebrate it. हाँ, मेरा मियाँ ने 17 साल बाद शादी के मेरे लिए एक चाय बना दी। मतलब एक बस चलाना इतना मुश्किल था कराची में। ये तो फिर कितने साल लगे? ये तो फिर Operational constraints है ना। पिछले तो 3-4 साल को शहजाद आप डिस्काउंट ही कर देना, मतलब वो तो एक पाकिस्तान का एक कोई एक्सेप्शनल ये अजीबोगरीब सा जो है वो एक था, किस तरह से प्रोविंसेस लड़ रहे थे, किस तरह से कराची के फंड्स के लिए भी लड़ाइयां चल रही थी, बहुत कुछ ऐसा हो रहा था। तो आई थिंक कि उसको थोड़ा सा अगर डिस्काउंट ही हम लोग कर दें, उसको हम एक नाइटमेयर की तरह ही सोचें, बस हो गया और अब हम उठ गए उससे। स्टिल नया फिर भी 10 साल रह जाते हैं। No, absolutely. I think, of course, there are problems. There has been work on transportation before as well, but I think this coordinated kind of modern public transport bus service, I think ये एक बहुत ही needed चीज थी। और ये वही बात हो गई कि ना करने पे भी मसला, करने पे भी मसला, तो अब किया है तो जाहिरी सी बात है उस पर हम बात भी करेंगे, उसको हम सेलिब्रेट भी करेंगे, वो एक अचीवमेंट की तौर पे भी उसको लेंगे, क्यों ना लिया जाए, मतलब अच्छी बात है। और साथ फीडबैक भी लोगों का लेंगे उसके ऊपर। आज उसके जो रूट्स हैं उसको एक्सपैंड किया जा रहा है और भी मतलब उसमें एडिशंस होंगी। सो माय पॉइंट वाज दैट गॉट मोर विजिबिलिटी बिकॉज इट्स कराची, राइट? सो ये हमें थोड़ा सा देखना है कि किस तरह से जो बहुत सारे चीजें सिंध के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी बहुत, मतलब आप जब सिंध सोचते हो तो वही पंजाबियों को ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या है, सिंध एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस हर जगह सिर्फ आग होगी और पता नहीं क्या होगा, लाइक स्ट्रेंज स्ट्रॉमैनिंग हो रही है इधर। Preh is not talking from Punjabi perspective, she is talking from perspective of having visited. And when she says कि infrastructure साहिवाल और सिंध में एक stark difference है, it's factual, right? So I think that's not just but बाकी पूरे मुल्क का पैसा चूस के पंजाब में लगाते हैं यार। पंजाब ये तो आप ये कह सकती है, आप पंजाबी हैं, हम नहीं कह सकते। मैं भी हूँ पंजाबी, तो इसलिए, और मैं रहती भी हूँ, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जो इसीलिए मैंने पहली चीज यही कही कि बजटरी जो इनइक्विटीज हैं उसको भी माने थोड़ा सा, ये तो एक मसला है ना। तो of course yeah you can so the bus thing is just a bus that is running on the regular road, right? It's not even like a metro bus का जो पूरा बना हुआ है लाहौर में, it's just the bus running on the road जिस पे सारी गाड़ियां चलती हैं। yes yeah 15 साल no but listen Shehzad, एक second, the metro system, right, also बहुत सारे critics भी थे उसके, they used to say कि ये क्या इसकी वजह से आपने जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कॉर्डन ऑफ किया है, उसको सेक्शन ऑफ किया है, ये किया है, इट्स अ बिगर इंट्रूजन, राइट? इट्स अ बिगर इंट्रूजन इनटू द एग्जिस्टिंग लैंडस्केप। तो अगर कोई एक ऐसी चीज है जो एग्जिस्टिंग लैंडस्केप के अंदर आके फिट हो जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल अच्छी बात है। आई एम जस्ट सेइंग इट शुड नॉट टेक 15 इयर्स। इवन कलमा चौक फ्लाईओवर, मिनाइल आप भी लाहौर में होंगे उस टाइम, मैं रिक्शों में ट्रैवल, हर रिक्शे वाला माँ बहन की गालियां देता था PMLN को जब वो बन रहा था, बट PMLN प्लान्ड इट लाइक दैट कि इलेक्शन से पहले वो कंप्लीट हो जाए किसी भी हाल में। वो इलेक्शन से पहले कंप्लीट हो गया, उन्हीं रिक्शों में मैंने ट्रैवल किया और वही लोग दुआएं दे रहे थे, सेम, लिटरली द सेम पीपल। आई डू वांट टू आस्क अबाउट द ब्यूरोक्रेसी एज वेल, बट आई वांट मिनाहिल्स टेक ऑन दिस। मैं जितने ब्यूरोक्रेट से बात करता हूँ, जनरल, अगेन माइट बी अ परसेप्शन, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम देम हु वर्क, एंड आई वुड लव टू गेट मिनाहिल्स टेक ऑन दिस एज वेल। दे ऑल से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, सिंध की ब्यूरोक्रेसी बेहतर है। Minahil, have you heard that? What's your take on this before we get Nayab on this? Wait, क्या है, क्या कंपैरिजन है? पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो सिंध की ब्यूरोक्रेसी बहुत बेहतर है। I have heard that too.
और अपने academic circles में, people who have tried to work in Sindh for research, और मतलब research की appetite हर किसी की नहीं होती, हर मुल्क का ये मसला है, nobody wants to dry their laundry in public, तो research से सभी थोड़ा सा कतराते हैं। लेकिन जिन लोगों से भी मैंने बात की है वो ये कहते हैं कि एटलीस्ट काम करना, कुछ इनोवेशन करना, कुछ नई चीज ट्राई करना। पंजाब bureaucracy has been more forthcoming than Sindh bureaucracy, and more recently Pakhtunkhwa has been very open also. So do you want to phrase that as a question to Nayab, because I feel like you will come from a lot more educated place than me. मैं बहुत easily If you sort away हो frame जाता that हूँ. as a question to me, my answer will be that I have not worked with the Sindh bureaucracy or with the Punjab bureaucracy, so I don't think I'm educated enough to answer a question on the bureaucracy and their workings. Well left. But Shehzad, I'm still thinking about this comment that you make कि ये चीज 15 साल पहले हो जानी चाहिए थी। इस तरह तो हम किसी भी इस तरह तो सब कुछ ही 15 साल पहले हो जाना चाहिए था, ऐसा तो 50 साल पहले हो जानी चाहिए थी ये चीजें। I don't know if you. But should we be I don't think it's a valid. Are we saying it's a bad thing that the bus service? No, I'm not. But should we be saying it's revolutionary, ultra-modern transportation? Nobody has said that it's revolutionary. The point was कि पहले आप लोग कहते हैं कि जब आप चीजें करते हैं तो उनको मार्केट नहीं करते हैं, फिर जब उनको मार्केट किया जाता है, और इस मेरे ख्याल में पीपल्स बस सर्विस को बहुत अच्छी तरह मार्केट किया गया है, वो कैंपेन भी बहुत अच्छा है, इट इज कैप्चरिंग अटेंशन। तो मैं उसके जवाब में कह रही थी कि भी जब जाहिर है सेलिब्रेट करेंगे तो एज एन अचीवमेंट ही सेलिब्रेट करेंगे ना, कि दिस इज समथिंग वी एडेड। तो उसका रिस्पांस ये तो नहीं हो सकता। Should you be doing that? 100%. As somebody who's born and bred Karachiite, has lived all his life in Karachi, जब मैं देखता हूँ कि यार लाहौर ने एक मेट्रो बस बना ली, जितनी गालियां पड़ी उनको, जितनी भी गालियां पड़ी बनवा ली, रिसोर्सेज ज्यादा थी मान लिया, सब कुछ मान लिया, एक डेडिकेटेड मेट्रो बस के जो स्टेशन हैं वो, you've seen them, right? They're just as good as न्यूयॉर्क के सबवेज, और कराची, ऑरेंज लाइन कराची, एंड वी आर लाइक जी हमने अब रोडों पे बस चला दी है, एंड यू आर जस्ट लाइक ब्रो, तो ऐसे तो मैं भी बाकी शहरों को ये 10-10 साल पहले कर सकती हूँ ना। तो ऐसे तो मैं भी ये कह सकती हूँ कि सिंध के किस किस इलाके के अंदर BHUs हैं और किस तरह लेडी हेल्थ के वर्कर्स हैं और कितना बड़ा हेल्थ का नेटवर्क है। सो लेट्स जस्ट एग्री कि डिफरेंट सर्विस डिलीवरी जो है वो शायद मुख्तलिफ सियासी पार्टीज की उसमें स्पेशलिटी होती है या फोर्टे होता है। ऐसे तो फिर हम वही करते रहेंगे ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एवरी मतलब यस किसी ने कोई एक चीज पहले की, किसी ने कोई एक चीज बाद में की, लेकिन अच्छी बात है कि वो चीज हो गई, rather than I think doing it this way. I think one of the bigger issues also that gets highlighted is that Sindh में कुछ चीजें हैं जो इतनी, they're so painful for us to reckon with that it becomes impossible to extend like any kind of leniency. अब जैसे for example मिठी में इतने टाइम से चाइल्ड malnutrition and starvation का मसला चल रहा है, continues to go. दादू में अभी recently जो fires consumed like a whole network of homes उधर, and the fact that there was not even a simple fire brigade that was deployed. ये जो the gravity of these incidences and the frequency of these incidences, that is something that I think it brands itself quite permanently. And शायद because we are closer, at least Shehzad and I, we both live in Karachi, तो हमें जो सिंध की ongoings है, मैं तो खैर as a from a Sindhi perspective, हमारे घर में तो routinely Sindhi media भी चलता है, वहाँ पे ये चीजें ज़्यादा highlight भी होती हैं. The average non-Sindhi Karachiite may not be so connected to it, but I am very connected to it, for example, and for that reason I feel a lot of pain, honestly, when we see these things, and the reality of the situation is just, oh, fire brigade nahi hai, but yeah, fire bus nahi hai. So those are the things really, and it's both a bad thing, but it's also an opportunity. There's such little that they can do to fix these smaller issues that cause unimaginable pain and torment to people, but somehow the delivery on that also has been quite slow. Like it's not up to par. And so I understand Shehzad's contention with
बस चलाना कोई खास बड़ी बात नहीं है। ऑल्दो टू सम डिग्री आई अंडरस्टैंड कि देखिए इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स एंड वो सारी बातें जो नायाब ने की है कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, ऑल दोस थिंग्स आर एब्सोल्युटली वैलिड, बट ये जो जो स्टार्क पेनफुल चीजें होती हैं सिंध के अंदर, दोस आर द थिंग्स दैट दे रियली नीड टू यू नो लाइक exponentially improve on in a very short amount of time. एक पल में पराया कर दिया पूरे ने। कराची में मुझे साथ रखा, फिर जब सिंधी पर्सपेक्टिव आया तो देन शी सेड शहजाद गुड बाय, हमारे घर में सिंधी पर्सपेक्टिव होता है। शहजाद तो केटीएन नहीं देखता होगा, मुझे उसकी शक्ल से समझ में आ गया, तो माँ भी सिंधी, उसकी सिंधी से मुझे समझ आ गया कि तो केटीएन तो माँ नहीं सिंधी देखता, को ना केटीएन तो खैर कूड़ी भोलड़ी सफ़ा कूड़ती ॻाल्हि आहे, मां ॿुधायां तो सुठो सिंधी माण्हू आ मां। नायाब असांखे जवाब ॾे। हाँ जी, मैं इसका नयाब अच्छी भी आपस में पंजाबी गल करना शुरू कर देने मैं थाली का बैंगन जवाब ये दूंगी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चेंज हुई भी हैं। अगेन लाइक फॉर एग्जांपल सिचुएशन इन थरपारकर, जो काफी सारी पिक्चर्स जो शेयर होती है, स्टैटिस्टिक्स शेयर होते हैं, दे आर फ्रॉम अबाउट 10 years ago. The situation has changed over there, and I make it a point to share a couple of those updated statistics with you as well, because डेफिनेटली इस पे काम भी हुआ है। बट मसला ये है कि अगेन जैसे आपने कहा कि शायद उसको विजिबिलिटी मिलती नहीं है, उसमें शायद कुछ कोताही पार्टी की भी है, लेकिन शायद क्योंकि पार्टीज को जिस तरह से मलायन किया जाता है और जिस तरह से कुछ पॉइंट्स पकड़ के उनको फिर बार बार दोहराया जाता है कि जब एक चीज में चेंज आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, सर्विस डिलीवरी को एक्सपैंड करना चाहिए। अभी फायर ब्रिगेड की जो आपने बात की, लाड़काना के अंदर भी कुछ लॉन्च हुआ है उससे रिलेटेड, एंड आई एम श्योर यू नो दैट दिस इज गोइंग टू इंटेंसिफाई फॉर श्योर। बट अगेन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो पिछले 3-4 साल का पीरियड है उसके अंदर अगर कुछ चीज़ों के अंदर स्टैग्नेशन भी आया तो मेरे ख्याल में उसका एक बहुत बड़ा रीज़न हाइब्रिड रिजीम थी, और जिस तरह से लड़ना पड़ रहा था सूबों को अपने फंड्स के लिए, अपनी ड्यू शेयर के लिए, आई थिंक दैट स्टैग्नेशन was a result of that. And so look at how just in the last 2-3 months you have seen certain चीज़ें जो रुकी हुई थी वो एकदम से चलना शुरू हो गई हैं, right? So I think that this is definitely going to be a process that you will see more change in the coming year as well. Since हम let's not get into एक रिफॉर्म में फड्डे शड्डे करते रहे, I want to bring you in. Fine. नहीं मैं एक सॉरी 10 दो तुसी। नहीं एक आई थिंक मतलब ये जो प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब एंड मे बी लाइक अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और मतलब कोई जो पॉलिटिकल इकोनॉमी पे काम करता है, दैट पर्सन इज अ बेटर क्रिटिक ऑफ दिस और विल बी एबल टू गिव अ बेटर आंसर टू दिस। लेकिन मुझे क्या लगता है कि मतलब पॉलिटिशियन का काम इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मतलब जो पर्सन हु इज इन पॉलिटिक्स उसका वो तो ब्यूरोक्रेट ने करनी है ना इम्प्लीमेंटेशन, जिसको आप पटवारी कहते हैं या जिसको आप कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट का हेड कहते हैं, डीसीओ कहते हैं। अब तो डीसीओ शायद नहीं होते, जो भी मतलब whoever the administrator is. So I think this relationship between an elected constituent versus an administrator, I think ये दो फर्क स्ट्रीम्स हैं। मतलब ऐसे ही है ना पाकिस्तान में। तो आई थिंक जस्ट रिलाइंग के पॉलिटिशियन ही ने डिलीवर करना है, जो कि उसका काम है। मैं आई एम नॉट एब्सॉल्विंग देम ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी है, और आप हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, यू नो, इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तहसील, व्हाटएवर। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड टू दैट कि जो पॉलिटिशियन का प्राइमरी जो काम है, आप इम्प्लीमेंट कुछ कभी कर नहीं पाएंगे अगर वो लेजिस्लेशन पास नहीं होगी। तो जाहिरी सी बात है फिर हमें शुरू यहाँ से करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो एक्टिव काम पार्लियामान के अंदर कौन कर रहा है, कम से कम वो चीज़ें, वो पॉलिसीज़, वो लेजिस्लेशन एग्जिस्ट तो करे ना। सो आई थिंक एक मवाजना ये भी करना चाहिए कि किस सूबे की पार्लियामान के अंदर, आई मीन नॉट मवाजना इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये भी फिर हमें फैक्टर इन करना चाहिए कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म जो है उसके अंदर कहाँ पर जो लोग मैंडेट लेके जा रहे हैं अपने लोगों का रिप्रेजेंट करने के लिए, वो भी किस हद तक एफिशिएंसी पार्लियामान के अंदर है।
इसी अगर and I agree with you in terms of legislation, PPP is far ahead. They think further ahead. Things like 18th Amendment, phenomenal. I don't think कोई और करवा सकता था. But मिनाहिल ने जो बात की बिल्कुल सही है. लोकल गवर्नमेंट नहीं होती ना पाकिस्तान में, और एक परसेप्शन है कि जो हमारी फीफडम्स वाली पार्टियां हैं, दो मेन स्ट्रीम, वो लोकल गवर्नमेंट्स नहीं बनाना चाहती या वो पावर डिवॉल्व नहीं करना चाहती. सो अगर हम लेजिस्लेशन परस्पेक्टिव से भी देखें, so Minahil and Nayab, either who want to take this up and maybe talk about these two mainstream parties, there hasn't been a desire for local government. अब मर के लड़ के फाइनली सिलसिला शुरू हो गया है. बट अगेन आप लोग बोलेंगे कि इस तरह तो हर बात पे क्या कहा जा सकता है, बट अगेन दिस शुड हैव बीन डन years and years ago. लोकल गवर्नमेंट के बगैर गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, which was always going to be impossible. I agree with you. मेरा तो यही जवाब है कि बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए. एक थोड़ी सी बात करूं पॉलिटिकल विल के हवाले से. जो है ना, पॉलिटिकल विल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पॉलिटिकल विल होना, चाहे वो सियासी पार्टी के मेंबर की विल है, चाहे किसी रैंक के भी मेंबर की विल है, पार्टी चेयरमैन, टॉप टियर लीडरशिप, सेकेंडरी लीडरशिप, और फिर असल में जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं और उन चीज़ों को एक्चुअली अपने इख्तिताम तक लेकर जाना, ये दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं ये समझती हूँ कि विल बिल्कुल एग्जिस्ट करता है. अभी रिसेंटली एहसन इकबाल के जो साहबजादे हैं, अहमद इकबाल साहब, वो काफ़ी देर से लोकल के ऊपर काम कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली उन्होंने जो एक एक्ट, आई डोंट नो इफ इट्स अ रेजोल्यूशन और एन एक्ट, बट ही हैज टेबल्ड समथिंग एंड इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. सो ये विल एग्जिस्ट करती है, बट बीच में जब कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं तो आई थिंक यू ऑल्सो हैव टू फैक्टर इन के बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें चल रही होती हैं. So I mean, one of the most prominent members of PMLN. I mean, I'm being fair here. Like पहले तो आप कोशिश कर रहे थे शहजाद हमें लड़वाने की, लेकिन मैं क्योंकि मुझे रेटिंग ना मिले, सबको मिल जाए, मुझे ना मिले, आप लोग ना एक दूसरे को लोटा बोलें. मुझे पता है बहुत कोशिश की कहाँ से लिफाफे सब आपस में लड़े, कोई फायदा नहीं मेरा. लेकिन हमने आपके मंसूबे को नाकाम कर दिया. ये देखें, पीपीपी सिंधियों को भूखा रखना चाहती है. पीपीपी चाहती नहीं सिंधी तरक्की करें. नहीं, मैं बिल्कुल चाहती हूँ जो भी होंगे, अगर मतलब जो एवरीथिंग विल बी पास्ड ऑन टू यू, डोंट वरी. देखो मतलब मैं, हाँ सॉरी ना, आप you complete your thought. मैं तो local government की बात कर रही हूँ. What I was just trying to say was कि will exist करती, मुख्तलिफ लोग इन चीजों पे काम कर रहे होते हैं, बस ये थोड़े से टाइम टेकिंग मंसूबे होते हैं. तो जैसे मुझे पता है कि अहमद बहुत देर से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड फाइनली नाउ दैट यू नो ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि बहुत सारे लोग ब्लॉक भी करते हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें होती हैं, लड़ना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना पड़ता है. पाकिस्तान के अंदर सियासत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. So, but you know, now he has been successful in getting it done. So that's great. Minahil? I think मैं तो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से ही बात करने लगी थी कि एजुकेशन स्पेंडिंग की बात करी थी. तो मेरी नज़र में तो लोकल गवर्नमेंट्स का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप मतलब लोकली टैक्स कलेक्ट करोगे और फिर उसको लोकली लगाओगे. कि अब एक स्कूल है, उसमें बिजली नहीं आ रही, तो उसकी पूरी जो फाइनेंसिंग है वो वरना प्रोविंस के थ्रू होती है आजकल. जैसे 18वीं तरमीम के बाद, पहले फेडरली होती थी. इमेजिन, आई कांट इवन थिंक अबाउट कि तब कितनी गवर्नेंस के मसले होंगे. तो अब मतलब मेरे ख्याल से तो जितनी भी चीज लोकलाइज्ड हो उतना ही बेहतर है. सो मतलब एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से तो आई थिंक इट्स अ रियली रिमार्केबल थिंग दैट्स गोइंग टू हैपन. So since we're discussing reforms, I would love for Preh to frame this a little rather than us debating bus service अच्छी है, कब होनी चाहिए थी. अगर हम जनरली बात करें, I think Nayab's also alluded to this a lot कि चीजें रुक जाती हैं, चीजें ब्लॉक हो जाती हैं, कोई ब्लॉक करने वाले हैं. तो from the outside, as somebody who talks about reform, somebody who looks at this and says कि यार ये चीजें होनी चाहिए, maybe Preh, what's the wish list? What would you have liked
to be seen, and then maybe we can get into the weeds of it to see who's blocking this from happening. Yeah, the way that at least I have, Minahil and Nayab probably have the benefit of working quite at the grassroots level. The things that affect me in my ability to do my work are a lot, they're at a broader, higher, like 50,000 foot level. The biggest reform that I would like to see is effective taxation, right? On sectors that have typically eluded the tax net. I want to see agricultural taxation and real estate taxation and those things where capital leaves productive sectors and goes directly to these unproductive sectors where you are not paying any tax for sitting on plots and plots of land in DHA or wherever the hell you buy them. So these are the things that bother me. For example, someone who thinks, someone who's sitting at this level, I would really like to know, for a long time, this has persisted. And in that time that this has persisted, value has consistently been extracted from the country to the point now where we are moving from crisis to crisis. Isme koi, there's no two ways about it now. Pakistan mein kam value reh gayi hai to extract in that way, in the way that you can talk about which politicians have done it or which bureaucrats have done it. I don't want to get into that conversation. I just want to say that everyone has done it. Everyone has played a role in milking this country for what it's worth, with the result that very little milk is left. So those broader reforms that you need in terms of, being able to generate the revenues to run this country, what is the political will on that front from these mainstream parties? I would love to know, because I don't see this status quo continuing. It's going to end up in a very, very bad situation economically for us. And uska bhi main aur tum aur hum sab shayad we will be able to weather the storm. Lekin jo bhugtega us storm ko actual mein, those are the people on the ground jinke liye hum, we take up the effort of advocacy and stuff. So I would like to know what is the political will on those things? And is there a political will? And second, is there a competence and understanding that we are not in a good place anymore? What is the role that technocrats or, these expert opinions can play? I think jab Khan Sahab 2018 mein aaye the, so I was most excited about Dr. Atif Mia being on the Economic Advisory Council. I love the man, I love listening to him. He has taught me so much. Lekin the fact that he was immediately gone, but the fact that then there are other expert opinions who are voicing these opinions loud and clear, repeatedly in columns on Twitter, it's anyone who wants to learn about the economy doesn't need to make much of an effort anymore. All that information is out there for what Pakistani reform should look like. So in that sense, is there a political will to understand those? And B, what is the competence of the current administration in understanding and internalizing them? मिनाइल नायाब आइदर मिनाइल के दोस्त ने भी वो एडवाइजरी काउंसिल छोड़ दिया था आतिफ मियां के रिमूवल के प्रोटेस्ट में. Okay, so जवाब देने के लिए I think नायाब, we are all looking at you. No, sure. I think absolutely. So I 100% agree with you. एक छोटी सी चीज में let me start with a disagreement. जो इस आपके इस point में जो मेरा जिस चीज से इख्तिलाफ होगा वो probably ये होगा कि मैं ये नहीं समझती. I think we need to get rid of this thinking that we need to have technocrats above. We need to have technocrats running things, or we need to have a technocratic setup. And that's not what I'm saying, to be honest. I'm not saying that I'm just saying that they bring a certain expertise to the table. Oh, so can they be part of the discussion? That's what I mean to say. बिल्कुल. So I think we're all agreed on the fact कि मेरे ख्याल में जो जिस तरह के भी महकमे होते हैं, दायरे होते हैं हुकूमती, उनको हेड किसी पॉलिटिकल इंसान को ही करना चाहिए जिसके कोई पॉलिटिकल विल हो, विजन हो और अकाउंटेबिलिटी हो. बिकॉज टेक्नोक्रेट्स का सबसे बड़ा मसला ये हमने तो देखा, हमारे तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब मुशर्रफ के दौर में वो भी टेक्नोक्रेट ही थे और वो अब कब कहाँ चले गए हमें पता ही नहीं. I mean it's crazy that we don't even know where he is now.
So, you know, I'm very, very skeptical of this technocratic setup. I think experts का होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक collaborative framework होना चाहिए. और course में जो है वो जाहिर के you know उनका उसके अंदर बहुत fundamental role है. दूसरी जो चीज है, बिल्कुल आपने ठीक बात की. मेरे ख्याल में देखिए सोशल वेलफेयर की जहां तक बात आती है, I mean I can definitely speak for People's Party because social welfare is something that if you look at BISC for example, I think that speaks volumes about and it's an internationally recognized program. मतलब अगर आप देखें कि poverty की जो रेशियो मतलब स्केल अगर आप देखें तो जो ये कैश हैंडआउट्स होते हैं अब तो ये काफी हद तक रिकॉग्नाइज हो चुका है कि इनका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है लो इनकम हाउसहोल्ड्स के अंदर. सो लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऑफ कोर्स एक फोकस सोशल रिफॉर्म ऑफ सेफ्टी नेट के ऊपर डेफिनेटली है. जहां तक बात है मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म की, तो मुझे ये लगता है पर्सनली स्पीकिंग कि देयर इज एब्सोल्युटली पॉलिटिकल विल. बिकॉज मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा होपफुल हुई थी एक्चुअली जिस दिन यूनिटी गवर्नमेंट ने बजट पेश किया था और पार्लियामेंट के अंदर पहली दफा ये बात हुई थी कि हमने अपनी लैंड इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना है. हमने इसको एक एक्सट्रैक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि इस वक्त जो हमारी लैंड इकोनॉमी है वो हमारे शहरों की तरक्की में नहीं बल्कि उनकी तबाही के अंदर एड करती है. सो आई थिंक दीज आर पॉजिटिव स्टेप्स. Obviously, again, like I said before, there are stakeholders in these particular debates, right, and in these particular scenarios. So मुझे लगता है कि 100% इस वक्त इस चीज की एक्नॉलेजमेंट भी है कि टैक्स नेट को ब्रॉडन किया जाना चाहिए. इस चीज की भी एक्नॉलेजमेंट है कि हमारा जो लिमिटेड एक रिसोर्स है लैंड, उसको इस तरह से हम बिल्कुल भी जो है वो तबाह नहीं होने दे सकते अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए. एग्रीकल्चर एक्चुअली सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर फ्रेंडली हुकूमत भी हमेशा पीपल्स पार्टी की होती है. फार्मर्स नून लीग की गवर्नमेंट से तो एक्चुअली बहुत नाखुश होते हैं बिकॉज दे फोकस मोर ऑन traders and all of that. So in that sense, land is a priority, always should be a priority. Preserving land should be a priority. And I do think that I am seeing these debates become more sort of common now. And I think that जो जिस तरह से बजट की भी फ्रेमिंग आई और सब कुछ हुआ, मुझे लगता है क्या है. दूसरी जो आपने एक्सपर्ट्स की बात की है उसमें भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कुछ पॉजिटिव साइंस हमें नजर आ रहे हैं. अगर इधर आप पंजाब के अंदर देखें तो इस वक्त जो रिफॉर्म कमेटीज बन रही हैं काफी ज्यादा जो अनाउंस भी हो रही हैं, तो वो तो आपके भाई भी हैं. जी जी बिल्कुल. बहुत yeah, it became like a whole thing also. But so you know for the lack of better word वो hybrid किस्म की committees हैं जिसके अंदर एक्सपर्ट्स भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, सिविल सोसाइटी भी है और सियासी लोग भी हैं. तो मैं तो खुद पर्सनली इस मॉडल की बहुत ज्यादा I really like this model. And even on the federal level, a lot of such reform committees and a lot of big economists and experts are being brought on board. So I think that there is political will because देखिए इस वक्त जो क्राइसिस है मैं ये समझती हूँ कि ये तो इन अ वे थोड़ा सा हम एग्जिस्टेंशियल किस्म के क्राइसिस में आ गए ना. तो इस वक्त अगर कोई सिल्वर लाइनिंग इस क्राइसिस की होगी तो वो यही होगी कि इट विल फोर्स अस टू टेक दीज डिफिकल्ट एंड ड्रास्टिक मेजर्स. सो आई एम वेरी होपफुल के या हाँ. सो मुझे सवाल सिर्फ ये पूछना था कि उसके लिए एक आपको चाहिए होता है sort of a conducive structure, right, in order to effectuate these changes. अब you know the way the kind of experience I've had in the corporate sector, I've also been affiliated with an organization that works deeply in the agricultural industry. So there seems to be a perverse incentive that all the agriculturalists are the parliamentarians, and agriculture as a sector has also evaded taxation for that reason, because you know they're there to control the narrative within the parliament. So in order to effectuate meaningful reform, at least I would imagine that the makeup or the constitution of parliamentarians within these broader mainstream parties would need to change significantly. I don't see a Pakistan, at least I don't see a prosperous Pakistan
that has agriculturalists predominantly dominating the parliamentary discourse. It doesn't, from a structure perspective, it doesn't make sense to me. And it's because there are these perverse incentives at play. I wonder how easy it is for people like myself, for example. मैंने बहुत time wrestle किया है इस बात से कि why am I not in politics? I have something to say. Why am I not getting into it? लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस तरह से एंटर करूं. मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास will it have to be an access thing. मतलब कहने का मकसद यही है ना कि for someone who's young, for someone who, and I imagine there are many people in Pakistan who are young, who are passionate, who want to do something for the country, who want to create impact and have meaningful reform and be part of those discussions. Lekin I think the fact of the matter is that aside from PTI, which perhaps has done more to absorb the youth than the other parties, हमें नहीं पता कि हम किस तरह से जाके किसको जाके बोले. मतलब मुझे अपने अंकल को फोन करना पड़ेगा कि जी चाचू मुझे ज्वाइन करनी है पार्टी, आप अपने उस दोस्त से बात करें, तो वो उनसे बात करें, तो फिर वो बिलावल से बात होगी. Like I don't know how to do it, and I think that gap continues to persist. So it would be great seems to like see. You know exactly how to do it, Preh. You're just not doing it. I mean यही है ना, मतलब जब पता है क्या करना है, but that's not the way that it should be. आपकी तो full speech लिखी गई है. I think there are two points if I can get to them. So देखिए, ये तो आप barrier to entry तो इस तरह से नहीं लगा सकते कि agriculturalist को सियासतदान नहीं होना चाहिए, industrialist को नहीं होना चाहिए, किसी urban professional को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना stake तो होता ही है. अब यहाँ पे आती है रियासत की जिम्मेदारी. दुनिया के अंदर कोई भी इंसान खुशी से टैक्स नहीं देता. ये लोगों को लगता है ये मिथ है. अब वो सारे भी मुल्क जहां पर 50% टैक्स लिया जाता है या जहां पर हाईएस्ट टैक्स एक्सट्रैक्शन के रेट्स हैं, रियासत की जिम्मेदारी होती है. रियासत को मैकेनिज्म्स निकालने पड़ते हैं और बहुत दफा लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उनको अपने किसी इंटरेस्ट के, अपने किसी उनकी अपनी किसी इंटरेस्ट को थोड़ा सा उनको साइडलाइन करके किसी कंसेंसस पे आना पड़ेगा कि जी हाँ जी हम ये काम करेंगे, लेकिन इसमें से इतना फीसद हम रियासत को देंगे. So absolutely, I don't think that we can say कि जी, because then that becomes a slippery slope. Then any industry that is taxable, then you should not have any person like that in the government, right? So वो हमें ये करना है कि हमारा जो social contract है वो इतना मजबूत होना चाहिए और रियासत की जिम्मेदारी है ये करना, taxes extract करना, कि हर शोबे के ऊपर वो टैक्सेस लागू होने चाहिए. ये तो यही बात तो हम इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में भी कर सकते हैं. अब जब सुपर टैक्स की बात हुई, मेरे ख्याल में सुपर टैक्स I thought it was a very welcome step, but then of course it's going to anger a lot of people. बिल्कुल इसी तरह जब हम टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस आएगी. तो हम पाबंदी तो नहीं लगा सकते कि कौन ज्वाइन करे सियासत और कौन ना करे. But I do have to say that this is where the state's responsibility comes in, and I think that these couple of things जो मैं बार-बार कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि जो पिछले 2-3 महीने के अंदर ही, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम एक क्राइसिस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें 2-3 इस तरह की चीजों से विल नजर आई है. लैंड इकोनॉमी को टैक्स करने की बात पहली दफा पार्लियामेंट में हुई है after that debate existing in other circles and in intelligentsia and and experts and all of that. It has entered the parliament, and then the super tax on industries, that is also something that's very very important. Then of course Mifta Ismail has also spoken about jo chote tajir hain, jo like these jewelry shops and things like that, of course, like huge revenue making entities. तो consensus के साथ होगा, and I believe that is the process that should be followed with all stakeholders. ये हम मेरे ख्याल में ये एक हो जाना चाहिए. हम सबको ये realize कर लेना चाहिए कि whatever our personal interest, we have to pay a certain amount of our income and wealth into taxes. That's a responsibility. Nayab, I agree with you, but let's stick on this discussion. I agree with you 100%. Lekin the idea the elite will give up their elite privileges easily, it will never happen. And I think that's why I'm saying that it has to be extracted. But extract वो कैसे करेंगे कि जिनको लाने वाले elite है. When we say
I don't think there's any point debating this as well. कि right now the unity government, which I think is a great name that you've given them, मैं भी confused रहता हूँ PMLN PDM क्या बोलूँ. I think they should advertise this a lot more. Unity government, I like that. पता नहीं unity कितनी रहेगी नहीं रहेगी. But obviously establishment के support के साथ unity government आई है. Establishment की जब हम बात करते हैं, it's not just the military establishment, right? It's also the elite consensus. मियाँ मंशा अगर प्रोटेस्ट करें तो बाजवा साहब को भी जाकर उनको मनवाना पड़ता है. एक elite establishment भी है. और एस्टैब्लिशमेंट एलीट एस्टैब्लिशमेंट को एंगर नहीं कर सकती. आपके जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एंगर नहीं कर सकती. तो जब हम कहते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट है, ये एलीट है जिन्होंने पाकिस्तान को एक एक्सट्रैक्शन इकोनॉमी बनाया हुआ है, एक रेंट सीकिंग इकोनॉमी बनाया हुआ है, वही गवर्नमेंट को लेकर आए हैं उनकी सरपरस्ती पर. सो द आइडिया कि वो उनके अगेंस्ट जाकर रेवोल्यूशन लाएंगे या उनके लाने वालों से वो टैक्स लेंगे या उनके बजट में से लेके अवाम को देंगे. Shehzad, I completely disagree with that. No, by your logic, देखिए यहाँ पे फिर ये तो वो बात आ जाती है, आपका 2013 वाला इंसान बोल पड़ा है इधर, ठीक है. ये तो मैं देख रहा हूँ कि आप सियासत सीख चुकी हैं. आप सवाल को ना फिर पर्सनल बना देती हैं. आप कहाँ से उठते बैठते हैं मुझे पता नहीं है, किन किन घरों से आप उठे हमने देखा नहीं है. हम तो आपकी पूरी असलियत जानते हैं. किस बाजार में आप बैठते थे शहजाद, हम देखते थे. अब आप बड़ी बातें कर रहे हैं. किस के पास आपका बाप गया नौकरी के लिए, मेरे सामने की नजर है ये मेरी. नहीं, अच्छा, मैं बेसिकली कहना ये चाह रही हूँ कि देखिए जो आप जो बात कर रहे हैं ना, मिल गया मुझे, मवाद मिल गया. उस लॉजिक से तो फिर कोई भी ऐसे ममालिक जहां पर वेल्थी पीपल आर इन गवर्नमेंट, ठीक है, तो फिर तो वहां पर उनको बिल्कुल अनटैक्स्ड होना चाहिए. तो फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जहां पे लीड कैप्चर नहीं है इन टर्म्स ऑफ पीपल बीइंग इन गवर्नमेंट, ये तो उस तरह की बातें हैं ना कि जो हमारे यहाँ एक इस तरह बातें होती है कि फलाने मुल्क के अंदर देखें ऐसे होता है. बट द रियलिटी इज के बहुत सारे डेवलप्ड ममालिक के अंदर भी पीपल हु आर इन पॉलिटिक्स हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो भी देयर आर अ लॉट ऑफ वेल्थी पीपल, दे आर आल्सो कनेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं. बहुत उनके अपने होते हैं. Should we ban elite people from joining politics? That's not what we're saying. No, I'm not saying that. That's our not what politics, जो एस्टैब्लिशमेंट की भी पॉलिटिक्स है वो elite सेंट्रिक है. वो अयूब खान से आप ले लें, वो अपने इंटरेस्ट में पॉलिटिक्स करते आई है. सो दिस नोशन, आप कह रही हैं कि अब ये बदल रहा है. हम पूछ रहे हैं हमें आप कैसे यकीन आए कि जो लोग एस्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद से आए हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाकर अवाम को फायदा देंगे. This it's just a question of that. Again, two things. Number one, I don't think that this is a correct categorization. आशीर्वाद से जो आए थे, I think उल्टी बात है, उनके सर से आशीर्वाद उठ गया basically. So then a lot of things happened और उनके जो actual real support है और उनके जो अपने coalition partners उनसे तंग आए हुए थे और वो retain नहीं कर सके उस support को. So in my opinion, it's more कि किसके सर से आशीर्वाद उठा है. दूसरी ये चीज है, अगेन लाइक आई सेड, इट्स अबाउट कंसेंसस बिल्डिंग, राइट. मैं बात ये कर रही थी, जो मैं उन ममालिक की एग्जांपल दे रही थी ना, कि फिर तो देखिए हर तरह के एलीट इंटरेस्ट भी होते हैं. सियासत है ही ये चीज कि मुख्तलिफ इंटरेस्ट को हमने बैलेंस कैसे करना है, राइट. अब वहां पे डिफरेंस ये है कि स्टेट का स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो गया, टैक्सेशन एक्सट्रैक्शन का स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो गया, क्योंकि वक्त ज्यादा गुजरा है विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, विद ऑन विदाउट दीज periods of interruption and all of these things. What I'm trying to say is it's not necessary. It's wonderful if we have all sorts of people in parliament and we have people from the grassroots and everything. But I'm saying this is not exceptional to Pakistan ke there are wealthy people in politics. What is exceptional to Pakistan is that there was such levels of institutionalized instability ke wo structures hum bana nahi paye. स्टेट और सोसाइटी का जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम स्ट्रेंथन नहीं कर पाए, राइट. सो अगेन सेकेंडली आई ऑल्सो थिंक, बिकॉज आई वांट टू आंसर प्रेस क्वेश्चन एज वेल, कि ये भी थोड़ी सी एक हम मोनोलिथिक कैटेगराइजेशन कर रहे हैं. मेरे ख्याल में काफी डिसेंट हर तरह की अब रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है. और to answer her question, I think absolutely. I mean, yes, the PTI did capture the imagination of the urban youth. That is true. लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त भी बहुत एवेन्यूज हैं. मैंने खुद बहुत सारे यंग लोगों को देखा है
PMLN के लिए भी काम करते हुए पिछले 6-7 सालों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गए हैं, पंजाब हुकूमत के साथ भी काम किया है, बहुत सारे यंग लोग सिंध गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं. सो इफ दिस इज समथिंग दैट एनीबडी वांट्स टू थिंक अबाउट सीरियसली, there are definitely avenues to do this. Of course, you have to accept that then you will be a part of one of these mainstream parties, right? वो अगर आप करना चाहते हैं तो why not? I don't think anybody's saying that wealthy people are not in politics everywhere around the world. इसमत शाहजहां के सामने एक बहुत बड़ी पॉडकास्ट की है जिसमें ये काफी डिस्कस हुआ है, why politics in Pakistan are particularly inaccessible to the poor. I don't think we can disagree with that. The idea कि patronage पे elections होते हैं, the idea कि elections पे जितना पैसा लगता है, I'm not saying this problem is unique to Pakistan or even unique to South Asia. It's very common in a lot of developing countries, even in a country like America जिसको हम bastion of democracy around the world समझते हैं, वहाँ भी entrenched politics हैं, वहाँ पे भी मुश्किल होता है, but एक AOC जैसी इंसान bartender बन सकती है. Stories like this are much rarer, and even when we see them happen in cases of Mohsin Davar or Ali Wazir, और फिर उनके साथ the powers that be जो करते हैं वो हमारे सामने ही है. Minahil, you haven't said a thing in a while, so let's get you in. मैं तो काफी इंजॉय करती हूँ आप लोगों की बातें सुनना. क्या कहूँ, आई थिंक मैं कनाडा में रहती हूँ तो मैं बहुत टैक्स देती हूँ, तो आई थिंक जो नायाब की बात है, आई थिंक वो काफी रेजोनेट करती है कि कोई भी कहीं भी टैक्स देना पसंद नहीं करता ज्यादा, बट इट इज डिफरेंट हियर. एंड मे बी आई कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन द यूएस एंड कनाडा के एक्चुअली यूएस में भी उतना ही टैक्स है जितना कनाडा में है, बट कनाडा में आपको लगता हुआ ज्यादा देखते हैं. यू नो देयर इज मोर, देयर इज फ्री पब्लिक हेल्थ. आप कहीं भी कुछ भी चले जाओ, किसी भी अस्पताल में किसी भी वक्त, ऑफ कोर्स इट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस, बट यू आल्सो सी योर टैक्स डॉलर्स एट वर्क, कोट अनकोट, जो के बात है. तो आई थिंक अगेन आई वुड गो बैक टू माय इनिशियल आर्ग्यूमेंट व्हेन वी स्टार्टेड दिस कन्वर्सेशन के बाद तो इम्प्लीमेंटेशन की ही है. आप टैक्स बेस बढ़ानी है, पाकिस्तान को भी बढ़ानी है, नोबडी इज डिसएग्रीइंग विद दैट, लेकिन फिर जब वो टैक्स के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको इस्तेमाल कैसे करना है, वो एक that challenge will remain if the challenge of bureaucracy remains. के अगर वही लोग हैं उसी निजाम के साथ चलते जा रहे हैं, उनको कोई फायर नहीं कर सकता, उनको वो बैठे हुए हैं बस, तो फिर ज्यादा पैसों का क्या होगा. So I think challenge of implementation will still remain even if the money comes in. Pire? I agree with her, honestly. Like, I don't have anything valuable to add on top of that. And I think to go full circle, I think bilkul we need more people to enter politics. I think we also need more people to just enter the government, matlab through the bureaucracy. I think वो भी उतना ही important है. अब शहजाद हम लम्स के same batch में गए थे. That's when we started seeing this wave of, you know, people from our crowd appearing for the CSS and getting into public service. There was this whole, matlab, I feel 10 years of a generation above us जिन्होंने वो नहीं किया, उतनी actively pursue नहीं किया जितना अब लोग कर रहे हैं. So I think these are all. Musharraf was the dictator. Yeah, of course, yeah. So I think कि वो again goes back to political stability होगी तो ही लोग सरकार में ज्यादा आएंगे, काम करना चाहेंगे और चीजें बदलेंगी. Even politics अगर हम बात करें, नहीं बोलो. People like Jibran Nasir, people like Amaril Jan, people like Amar Rashid, इसमें जहाँ Ali Wazir, Mohsin Davar, ये सब लोग पॉलिटिक्स में अब इसलिए हैं क्योंकि हमें एक 10 years of politics मिला. And I agree with नायाब कि कू तो 2018 में हुआ था. ये तो एक थोड़ी undoing है, but undoing भी वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने doing की थी. But let's get Pire into it. I think ये सारी बातें जो हमने की है ये बहुत अच्छी बातें हैं. You know, there is a political will among the mainstream political parties, and there needs to be all of this stuff at the bureaucracy level and at the administration level. Sometimes I just wonder, is there that same reckoning? And I imagine that there must be a similar reckoning at the establishment level की हम बात करते हैं, because I don't know, perhaps हम लोग इतने कोई खास बुढ़े लोग तो है नहीं, लेकिन मेरी एटलीस्ट लिविंग मेमोरी में मैंने इतना ऑनस्लॉट पब्लिकली अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट शायद नहीं देखा है. आई हैव नेवर सीन इट. एंड कीपिंग असाइड द फैक्ट दैट इट इज लार्जली कमिंग फ्रॉम, यू नो, PTI supporters who are just
incensed at the withdrawal of support. I think the fact remains that there is a crisis of PR even at the military establishment level, and that there is an increasing criticism and an increasing analysis of the role of instability of military dictatorships and what it has done for a parliamentary democracy like Pakistan. And I think I completely agree with Nayab, when she says that we've never had that kind of stability, because every so often it has been hijacked in increasingly violent ways by the establishment, so that there has not been enough of a run towards creating those systems and those institutions and that institutional power to be able to extract the necessary revenues to run this country. जितना मैं मिली हूँ बहुत सारे लोगों के साथ, मुझे लगता है कि they are all very smart people. मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास, we have this tendency to kind of paint people as idiots and morons, and इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है. You should meet the people I meet, Preh. You'll feel the same way. So, I've met some people. You should read some tweets. You should join Twitter. So, it's astounding that there is such a level of intellect there, and still the policies have somehow not been at odds with that. So I think even when Nayab now talks about the political will emerging from mainstream political parties, perhaps I'm being very optimistic, very naive, possibly. But I imagine that a similar kind of reckoning will be coming at the establishment level, for the simple reason that every single asset that has been developed by them has not panned out in the way that they had desired. And एक certain humility to aani chahiye. Usse, it should come from any normal person. And these are people we're talking about, people who have gone through extensive training, superior intellect, all of that stuff. So I imagine, optimistically, so if you want to call it that उस तरह की भी कोई awakening शायद हमारी establishment में भी होगी. Jalib will be jealous of your satire at the end कि ये superior intellect वाले जो लोग हैं, तू So Nayab, establishment कितना बड़ा impediment है in when we talk about reform? No, I think I really what Preh has said has resonated with me quite a bit. I think there has been a reckoning, and it was a long time coming. और मतलब देखिए 2-3 चीजें, right? बोलती cat woman बन गई थी बीच में. There's a storm coming, Mr. Wayne. How will you continue to live so large and leave so little for everybody? Yeah, no, I think there is a storm coming in the form of the unity government. But no, but the thing is that I also echo Shehzad's point. I think unity government is a fabulous name. Isn't it a fabulous name? Yeah, I fabulous. think so. So I think it also symbolizes a lot of things, and I think it's great. But मैं ये समझती हूँ दो चीजें. देखिए पहली तो ये बात है कि of course अब अगर कोई एक इदारा या एक एंटिटी ने इतना डीप रूट ले लिया है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, हम सबको ही पता है, there is no way that we are moving forward without consensus, right? जैसा कि आपने ये कहा कि मुझे ये लगता है कि there is now this realization that perhaps there were miscalculations and mistakes were made, and those which is a good sign. So what I do think is कि इस वक्त जो current जो सियासी क़यादत भी है, वो ये चाहते हैं कि एक बैलेंस मेंटेन. ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू गो बैक टू द हाइब्रिड मॉडल, ठीक है, जहां पर सिर्फ एक पॉलिटिकल फेस आगे है एंड लाइक a lot of things are happening. We do want to negotiate on several things, several issues of human rights. We want to negotiate on a lot of things, and I think this is the best route to do it, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एंटागनाइजिंग भी नहीं है. यहाँ पर रूम है कंसेंसस का, यहाँ पर मैच्योर सियासी जमातें वापस आ गई हैं, एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट आई है जिसकी वो रेकनिंग भी हो चुकी है, गलतियां भी हुई हैं, ठीक है, एंड so and there's a crisis. I mean, the basic point is कि खुदा ना खास्ता अगर ये क्राइसिस आगे चला जाता है तो भी ऑब्वियस सी बात है बेनिफिशरीज को सबसे ज्यादा लॉस होता है ना उससे. तो मेरे ख्याल में कि इस वक्त रिफॉर्म करना, मुल्क को चलाना
जो है वो सबके हक में है. I actually think that even a lot of beneficiaries of the system have understood this. So that's why I say कि ये reckoning हुई और हमारे लिए बहुत important है कि ये हुई है. And I think that you can see certain snippets of it. You know, how there is an effort not to comment too much on, you know, what the political leadership is doing and not to intervene on, you know, those types of issues. तो अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए. Politicians should do politics, and I think every institution should play its designated role. So Nayab, I want to ask you this because sitting on the outside हमारे लिए तो बहुत आसान होता है criticize करना, right? And it's always that eternal debate के evolution या revolution के आप हमारा ये आपस में भी डिस्कशन होता रहता है कि लेफ्ट की हमारी पार्टियां जो है हमारे दोस्त भी हैं, यार भी हैं, हम सपोर्ट भी करते हैं, बट हम दोनों को पता है पावर में नहीं आना है इन लोगों ने. सो दैट आइडिया ऑफ बिस्प का आपने जिक्र किया, इज पाकिस्तान परफेक्ट? नो. Does Benazir income support program and expansion into the Asas program over years, has that helped millions of people? Absolutely it has. तो वो जिसने भी कमेंट के अंदर रहकर इंक्रीमेंटली चीज की, कैसे बंगाली को बहुत क्रेडिट जाते हैं इसमें, इट्स ग्रेट. वो बाहर बैठ के आप बोलते रहते हैं कि चीज नहीं हो रहा, गरीबों को वैसे नहीं मिल रहे, उससे वो नहीं होता, अंदर रह के उस चीज का फायदा हो जाता है. सो वंस नाउ यूर इनसाइड, हाउ डू यू ग्रैपल विथ नोशंस लाइक हमारी जो भी मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट्स हैं, फॉर वट एवर पोलिटिकल कंस्ट्रेंट्स दे मे हैव, दे हैव टू बी साइलेंट ऑन बलूचिस्तान. दे जस्ट हैव टू बी. वो एक रेड लाइन है. इसलिए आप लोग जब कहते हैं शायद रेकनिंग है, आई डोंट थिंक रेकनिंग है, बिकॉज थिंग्स लाइक बलूचिस्तान एग्जिस्ट. Baloch activists keep getting abducted for no good reason. So how do you grapple with that idea कि PPP ठीक है, 4 चीजें अच्छी कर देगी, 5 चीजें अच्छी कर देगी, but a thing like Nazim Jokio might happen where they will be standing with a murderer and you ethically cannot stand with them. So how do you grapple with this almost having to look the other way over certain things to ensure other things get done? No, I actually don't see it that way because मैं तो इसको एक continuity, जैसे कि मैं I think the first thing जो मैंने पहली चीज कही थी वो पसम था, वो context था. तो मैं तो समझती ही ये हूँ कि हमने हर चीज जो होगी वो होनी ये चाहिए कि हम जमहूरियत को मजबूत करें, जैसे थोड़ी चीज करके, और एट द सेम हम ये रियलाइज करें हम इस वक्त किस पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे हमारे पास कितनी एक्चुअल सही मानों में कितनी पावर है, कितना कंट्रोल है, कितना कुछ हम कर सकते हैं. उन चीजों के अंदर हम जो कुछ भी करें हम पूरी कोशिश करें, और हमें स्टेक होल्डर्स के साथ भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, और फिर हम कहाँ जाना चाहते. मैं ये समझती हूँ कि bigger picture matters a lot. For me, the continuation of democracy and that bigger picture matters the most. And I think for that, we need to keep this system going. Like you said, कि बहुत सारे लोग जो सियासतदानों को गालियां देते हैं, पिछले 10, 12, 13 साल के निजाम को गालियां देते हैं, लेकिन ये मेरे और आपके सामने की बात है कि इसी डेमोक्रेटिक रिवाइवल की वजह से मोहसिन हमारे सामने आए, अली हमारे सामने आए, लेफ्ट की बहुत सारी पार्टीज हैं जो पिछले 7-8 सालों में रीऑर्गेनाइज जिन्होंने किया. तो जब तक वी विल नॉट गेट अ हाउस इन ऑर्डर तो उसके बेनिफिट्स ट्रिकल डाउन नहीं करेंगे, और आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि जैसे जैसे ये चीजें होंगी तो वी विल सी दिस. सो आई सी इट एज वर्किंग टुवर्ड्स अ लार्जर गोल. डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती है, लेकिन मुझे अगेन ये लगता है कि अगेन दिस इज नॉट एक्सेप्शनल टू पाकिस्तान. सियासत नाम ही इस चीज का है कि आप किस तरह से मुख्तलिफ इंटरेस्ट को टेबल पे ला सकते हैं और मोस्ट वायबल सोल्यूशन निकाल सकते हैं. तो हम असल में पीछे इतना है कि हमें तो अभी बेसिक्स के ऊपर जाना है, हमें तो पार्लियामेंट की वर्किंग के ऊपर बात करनी है, हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस पढ़ानी है लोगों को, हमें तो ये बताना है कि ये निजाम काम कैसे करता है. और अगेन मैं ये कहूंगी कि ये पिछले 4 साल हमें पीछे ले गए हैं. हम वापस डिबेट के अंदर आ गए हैं कि 18वीं तरमीम ठीक है या नहीं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर है, सियासतदान सारे चोर डाकू हैं, फलाना. So this is how I see things, and I think
इसी तरह होता है, आप अपना काम करें, जो चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उनके ऊपर जरूर आवाज उठाएं, बट बिगर पिक्चर को हमेशा याद रखें कि जितनी ज्यादा हम इसको आगे लेकर जाएंगे हम सबका फायदा उसमें। Minahil, do you want to weigh in? You haven't said anything for a while. आप फिर एंजॉय कर रही हैं पॉडकास्ट, नौकरी पे बुलाया आपको, काम करें, ये होते हैं ना पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स। मुझे यही था कि और कोई काम कर दे और मेरी बस शक्ल आ जाए। मैं मैं इस पॉडकास्ट गई थी बट काम ना करना पड़े। I mean, I think you're right शहजाद के मतलब the way नायाब is saying, मैं उस बात से बिल्कुल agree करती हूँ कि changes incremental होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, you need to keep your eye on the bigger prize, but somehow unfortunately collateral damage बीच में बलूचिस्तान का ही हो जाता है। और मतलब not just in terms of you know the whole issue with the establishment and missing persons, but even developmentally, जैसे मैं बिकॉज मेरी फील्ड एजुकेशन है तो मैं मतलब ये नंबर्स मेरे लिए बहुत स्टार्क लगते हैं कि इस वक्त ये कोविड के बाद से इस वक्त 23 मिलियन स्कूल एज बच्चे स्कूल में नहीं है, आउट ऑफ स्कूल है, ठीक है। दैट इज you know a big proportion of the population. अब again that's another debate के स्कूल में क्या पढ़ते हैं, but वो है ही नहीं, they just don't go to school. तो ये जो स्कूल एज पॉपुलेशन है, मतलब पंजाब में 24% बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, बलूचिस्तान में 47, मतलब 45 के 47 को उर्दू में क्या कहते हैं, 47 नहीं 47। ये हाल है पंजाब के स्टूडेंट्स का, 47 1947 ही पता होता है यार बिनाहिल, हद हो गई है। 47% बच्चे जो हैं, फीसद बच्चे वो स्कूलों से बाहर हैं। तो मुझे तो लगता है कि बलूचिस्तान की तो हम डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की भी बात नहीं करते। सिंध की फिर आप मतलब हेल्थ और एजुकेशन और इन चीजों पे, सोशल सर्विसेज पे बात होती है, बलूचिस्तान की तो हम करते ही नहीं है। सो आई डू मतलब आई वांट टू टेक नायाब्स टेक ऑन दैट कि डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे मतलब आगे गवर्नमेंट्स जो हैं वो कितना फोकस करेंगी इन प्रोविंसेस पे। चलो आप यू मिसिंग पर्सन्स की आप बात नहीं कर सकते, बट व्हाट अबाउट एवरीथिंग एल्स? नहीं, हम कर सकते हैं मिसिंग पर्सन्स की बात, और उसके ऊपर जो है वो कमीशन भी जो बना था, और आज फरतुल्लाह बाबर साहब ने भी ट्वीट किया था that he will be appearing again and you know there will be some, I think some reform in that commission. फरतुल्लाह बाबर साहब अगर आप सुन रहे हैं प्लीज पॉडकास्ट पे आ जाएं, ह्यूज फैन, प्लीज आ जाएं यार, seriously he's one of the best guys in the People's Party. He's the best, he's wonderful, amazing. हम फरतुल्लाह बाबर कहते हैं, नयाब तो कूल है, like you know FB was talking to me. No like, joke, for a Facebook, second I thought that was like Fatma Bhutto. No, I said, Shehzad, I think I said that to you just to, you know, chatting. आप cool हैं, आप मान लें, आप बहुत cool हैं. No, but yeah, so उसके ऊपर भी बात होती है, मेरे ख्याल में उसको भी डिस्कोर्स में लाने के लिए बहुत लड़ना पड़ता है। इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि 2008 से 13 के बीच में जो 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि ऑफ कोर्स 18th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड, तो बहुत सारा हमारा काम तो उसी के अंदर हो गया, और अब हमें इसको आगे लेकर जाना है और डीप करना है इम्प्लीमेंटेशन का, एंड यू नो कुछ रिफॉर्म्स हम अभी सजेस्ट हो रहे हैं। आपने क्योंकि बलूचिस्तान की बात की कि उनका फिक्स हो जाना चाहिए, इट शुड नॉट जस्ट बी proportionate to the tax collection over there, but in fact they should get you know fixed amount, you know sum of मनी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके अलावा जहाँ तक फिर उसके बाद आगाज़े हुकूक़े बलूचिस्तान एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम था जो ज़रदारी साहब ने शुरू किया था। मैं आई जस्ट वांट टू से कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो पॉलिटिकल विल अगर होती है तो द फ्रूटफुल रिजल्ट्स दैट डू कम। अब वो बच्चे उसके बाद वो प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल था, देयर वर दीज यू नो किड्स फ्रॉम बलूचिस्तान जिनको स्कॉलरशिप्स मिलते थे पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और एक सेट कोटा था उनके लिए, और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई।
और उसके बाद वो इतना सक्सेसफुल हुआ। आई थिंक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो पंजाब की है, शहबाज शरीफ साहब ने भी फिर 2013 के अंदर उसको और एक्सपैंड किया और उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा वो किया। फिर पीटीआई की हुकूमत ने आके उसको श्रिंक कर दिया। तो बेसिकली अब हम क्योंकि वापस उसमें अगर उस निज़ाम में जाएं जहां पर ट्रूली हम 18th अमेंडमेंट को इन लेटर एंड इन स्पिरिट अप्लाई करें, तो तब मुझे लगता है कि निगलेक्टेड सूबों के लिए भी एक ब्राइटर पिक्चर आ सकती है। हमारे पास जो उनके बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं हम उनको एड्रेस कर सकते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज को हम एड्रेस कर सकते हैं, मिसिंग पर्सनस के इशू को हम एड्रेस कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इस पर डेफिनेटली और डिस्कोर्स होना चाहिए, और जो ये कमीशन है और इसका जो काम है और इसकी जो रिपोर्ट्स हैं हमें ज़रूर इसके बारे में बात करनी चाहिए। और शहजाद, एब्सोल्युटली लाइक यू शुड get in touch with बाबर साहब as well, because ये बहुत important issues हैं। बट मैं यही समझती हूँ कि जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे चलेगा, जो neglected provinces हैं उन तक भी जो ये वाली जो चीज़ें हैं वो ज़रूर पहुँचेंगी। So this is our mission is incomplete basically. We're starting from a point where everything is incomplete, and the more we go towards completion, I think थोड़ी मुझे तो ये फिक्स्ड वाला जो है और बिस्प का हिस्सा उनका बढ़ना चाहिए। ये बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अब होंगी। You also feel, I know हम सिर्फ नैब से सवाल पूछ रहे हैं, but नैब, you also feel like कि जो आप बिग टेंट कॉम्प्रोमाइज की बातें कह रही हैं, आई 100% एग्री कि यही पॉलिटिक्स होता है और इसको हम हमेशा से बुरा समझते आए हैं। हम चाहते हैं एक डिक्टेटर हो जिसके पास डंडा हो, वो डंडा घुमाए तो हर चीज हो जाए, राइट? सो व्हेन इमरान खान गोज ऑन टीवी एंड सेज मैं क्या करूं, नैब और सुप्रीम कोर्ट मेरे हाथ में ही नहीं था। भाई आपके हाथ में क्यों हो नैब और सुप्रीम कोर्ट? ये चीजें आपके हाथ में थोड़ी होनी चाहिए। मतलब इट्स दैट ट्रम्पियन आइडिया ऑफ डिक्टेटरशिप। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबडी कि आज बीजेपी जा चुके हैं, तो ट्रम्प बीजे खान जा चुके हैं, मे बी मोदी नेक्स्ट, वन कैन बी होपफुल इवन दो ये नहीं होगा। खैर मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, सॉरी, मेरी ADHD किक्ड इन। बट इवन व्हेन वी टॉक अबाउट PPP, राइट, आप जो मोनोलिथ की बात कर रहे थे, आई एम अज्यूमिंग द पार्टी इज नॉट आल्सो अ मोनोलिथ। सो पार्टी में अगर फ्यूडल्स भी हैं, पार्टी में अगर फार राइट पे भी लोग हैं, रिलीजियस लोग भी हैं, तो नाउ दैट आप you're seeing how the sausage is made, ये तनाव, ये पुश एंड पुल, is it also within the party? Like people like you are like बिस्क का बढ़ना चाहिए, whereas maybe some other people are like नहीं, sugar subsidy बढ़नी चाहिए. So these internal debates also happen in the party? Of course debates happen in the party, लेकिन सबसे पहली तो बात ये है कि जो सेंट्रल चीज़ है वो तो मैनिफेस्टो है, राइट? तो जब मैनिफेस्टो ये कहता है कि हम सूबों की खुद मुख्तारी पे यकीन रखते हैं और हम ये चाहते हैं कि सूबों के पास उनका ड्यू शेयर जाए, तो इसको कोई रेजिस्ट तो नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में जो बात होगी, क्योंकि हम 18th अमेंडमेंट के आर्किटेक्ट्स हैं, तो मेरे ख्याल में जो कुछ भी होगा, और फिर शाजिया मरी साहिबा जो बिस्क की इस वक्त चेयरपर्सन है, शी इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, शी वाज इलेक्टेड फ्रॉम सांगड़, और उनका खुद भी मतलब वो एक बहुत बड़े फ्यूडल खानदान को उन्होंने हराया था जब वो जीती थी। सो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल विल तो एग्जिस्ट करती है, और ये बेहतर होगा। जहां तक आप इंटरनल वो उसकी बात करें, यस, डिस्कशन, डिबेट, एवरीथिंग हैपेंस। मैनिफेस्टो of course is something central that we always have to keep in mind, but I also want to talk about the people of the party. Now it's also, after all, it's called the Pakistan People's Party. तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ वो लोग तो नहीं है जिनको आप टीवी पे देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सारे कारकुनान हैं जो पार्टी ऑफिसेज में आते हैं, जो हर पार्टी के इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे इतने सारे लोग हैं, फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस, लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो पार्टीज को क्योंकि बाहर से लोग इस तरह से देखते हैं, मेरे ख्याल में तो शायद वो इतना ज्यादा उसको समझ नहीं पाते। बट या, so many different voices, so much different, but of course there is a code of conduct that you must follow. So ये जो हमें एक परसेप्शन है कि ये फ्यूडल्स हैं, whatever Zardari says goes, whatever नवाज शरीफ says goes, even PMLN में हमें लगता है ज्यादा डिबेट और डिस्कशन होती है, बट PPP में फ्रॉम द आउटसाइड हमें तो लगता है कि बस वन मैन पार्टी है। यूर सेइंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इवन लोकल लेवल पे जो लोग हैं उनसे डिस्कशंस होते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ।
Dr. Nafisa Shah, you know, she's a very, very well-respected parliamentarian, very well-respected politician. You know, she's a PhD from Oxford. मतलब मैं और वो जब नाजिमा बनी पहले अपनी, वो इतनी नीचे से ऊपर आई, हालांकि उनके वालिद साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर भी थे, बट शी चोज टू यू नो नाजिमा बनी पहले वो इस तरह करके. सो आप अगर देखें कि जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन यू नो सच पीपल एंड देन द पीपल अराउंड देम हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड द पीपल इन देयर constituencies and the new people who want to come in, it's something that you have to see, and actually I think you have to see it to believe it, क्योंकि हमें तो बस ये बताया जाता है कि 2-4 ऐसे लोग हैं. एक पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है एक सियासी पार्टी के अंदर. यहाँ पे हर इंसान अपने पीछे जो है, जो वोट लेकर आया है, वो 90,000 लाख लोगों की वॉइसेस को भी रिप्रेजेंट करता है. फिर उसके बलदियाती भी एक निजाम है, उसके नीचे यूनियन काउंसलर्स भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, बार काउंसिल्स हैं, बहुत कुछ है जिनसे वो मुशावरत करते हैं, बात करते हैं. फिर उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं तो CEC है, यू नो, विच इज द मेन फोरम वेयर the top party leadership talks about things. So there are multiple tiers, multiple everything. There's a universe inside a political party. तो हम उसको बस popular imagination में असल में हमने उसको reduce कर दिया. इसको मैं थोड़ा सा एक्चुअली चैलेंज करूंगी, नायाब, अगेन थ्रू जस्ट माय एक्सपीरियंस वर्किंग विद द PMLN when Shehzad Sharif was chief minister in, you know, the 2013, 14, 15 टाइम. तो मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है. हम लोग एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, गर्ल्स स्टाइपेंड प्रोग्राम. उसमें लड़कियों, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट लड़कियों का होता है प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल जाते हुए. स्कूल कम हो जाते हैं, दे कांट कम्यूट टू दो स्कूल्स, तो वो ड्रॉप आउट कर जाती हैं घर की तरफ. घर से भी थोड़े से उनको मतलब दिक्कत होती है, व्हाटएवर. सो दैट्स व्हेन द ड्रॉप आउट हैपेंस. तो उनको इनकरेज करने के लिए एक स्टाइपेंड प्रोग्राम था. तो उस पे मतलब मुझे लगता है महीने के शायद 200-250 रुपए मिलते थे लड़कियों को कि वो अपना कम्यूट फिगर आउट कर लें इस तरह से. तो एक दिन एक मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 250 तो बहुत कम है, इसको 600 कर देते हैं. बिल्कुल, मतलब वो उठे, सुबह उठे, उन्होंने कहा मुझे 250 रुपए कम लगते हैं, मैं इसको 600 चाहता हूँ. अब वो एक पूरा निजाम बना हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में आपने सेलेक्ट किए हुए बच्चियां, किसी रिसर्च की बेसिस पे वो 250 का नंबर है, एड आ रही है वर्ल्ड बैंक से, 600 उसको पूरा कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी. बट देयर वाज सच अ पावर डायनामिक विद इन दैट कॉन्फ्रेंस रूम दैट नोबडी एट दैट मोमेंट कुड चैलेंज हिम एंड से कि ये हमने कैसे करना है, मतलब इसके पैसे कहाँ से आएंगे, ये इसको हम इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे. सो आई डू थिंक दैट पर्सनैलिटी टाइप्स एंड, you know, leaders, they have a certain command over the audience that they're speaking to, और फिर उसमें बहुत power dynamics होते हैं. तो हर मतलब को there are some policies that get passed on a whim, जिनमें एक सियासी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से deliberation नहीं होती. So I'm assuming, you know, there are cases that have happened like this within the PPP as well. So I wouldn't paint a completely rosy picture कि अब हर बात No. इस तरह रोजी तो बिल्कुल भी नहीं है. वो तो बात देखें, हायरार्की तो ऑफ कोर्स होती है. मेरे ख्याल में हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ थिंग्स आर हर्ड, राइट, बिकॉज मेरे ख्याल में तो ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है ना. अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी देखें, जो भी कोई एक इंसान एक इदारे को हेड करता है, हम अगर एक ऑफिस की उसमें भी देख लें तो जो CEO है उसके लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो हर इंसान की हर बात के ऊपर अमल दरामद करेगा, राइट. लेकिन अगर हम एक ऐसा सिस्टम हो जाए कि जिसके अंदर ओवरऑल बाय एंड लार्ज पीपल डू फील सीन एंड हर्ड, आई थिंक दैट्स द गोल दैट वी शुड स्ट्राइव फॉर. सो आई वाज सेइंग कि जो वो वाला स्टीरियोटाइप है कि पता नहीं किस तरह से है और हर चीज जो है वो क्लोज डोर के अंदर डिसाइड होती है और मुशावरत नहीं होती. आई थिंक हर पार्टी के अंदर बहुत स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स बेहतर किए जा सकते हैं ऑफ कोर्स, बट स्ट्रक्चर्स डू एग्जिस्ट, फोरम्स डू एग्जिस्ट कि जहाँ पर डिस्कशन होती है. मिनाइल, ये सच है कि शहबाज शरीफ ने हनी ब्रिज बनाया था अपनी हनी के लिए? ये आपको क्यों लगता है कि मुझे पता होगा इसका जवाब? मैं सिर्फ ऑडियंस को बताना चाहता था कि ये एक जिनको नहीं पता, ये लाहौर में एक बड़ा रूमर है कि शहबाज शरीफ अपने ऑफिस से अपनी एक हनी के पास जाते थे और बड़ी उनको देर लगती थी, तो उन्होंने एक ब्रिज बनाया जिसको लाहौर में सब लोग हनी ब्रिज कहते हैं, ताकि वो ऑफिस से जल्दी पहुंच जाए.
इस बात का एक्चुअली मेरे पास जवाब है, लेकिन मैं आपको बाद में दूंगी। लीक कर दें यार, हमारी ऑडियंस जानना। आप सेफ हैं, आपको क्या टेंशन है, आप बाहर बैठी हुई। हाँ लेकिन नहीं, अगर ना होता तो ये पॉडकास्ट पे दे देती, इसको आप हाँ ही समझें। मिनाहिल, आप ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में भी कुछ कहना चाहती थी? मुझे बहुत पसंद है ओवरसीज पाकिस्तानी, तो मैं नहीं डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करूंगा उनके खिलाफ, लेकिन आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं। शहजाद मैं तो बहुत थक गई हूँ मतलब मुझे लगता है मतलब मैं कैसे आई गेस ऐसे शहर में रहती हूँ जहाँ बड़ा इजी है अपने आप को डिस्टेंस रखना ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो जिनको लगता है कि वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। तो आई थिंक मेरा पैगाम यही है कि मैं आपकी इंटेंशन और आपकी जो हुब्बुल वतनी है उसको नहीं चैलेंज कर रही, लेकिन मेरे ख्याल से अब अगर इफ यू हैव चोजन टू मेक अ डिफरेंट कंट्री और होम, तो अगर आपने कहीं पार्टिसिपेट करना है, आपके कोई ओपिनियंस है, आपके ओपिनियंस उस मुल्क के बारे में होने चाहिए, उस मुल्क के बारे में नहीं जहां आप नहीं रहते। सो आई थिंक यही मेरा पैगाम है। ये मैं ट्विटर पे जो मैं हफ्ता दर हफ्ता कैंसिल होता हूँ, एक हफ्ता इस वजह से भी हुआ था कि मैंने ट्वीट कर दिया था ओवरसीज पाकिस्तानी विल डू एनीथिंग फॉर इमरान खान एक्सेप्ट कम टू पाकिस्तान एंड लिव अंडर इमरान खान। फिर आपकी भी कोई राय है हमारे ओवरसीज भाई बहनों के बारे में? इतने ओवरसीज देखते हैं, हमारे पेट्रन्स हैं, आप लोग की बात नहीं हो रही। अगर आप हमारे पेट्रन हैं, आपके अलावा जो सारे हैं उनकी, ऑल नॉन पेट्रन्स ऑफ टीपी हु आर ओवरसीज, उनकी बात हो रही है। जी प्रिय। I would like to just continue what Minahil said, and पहली बात तो all overseas Pakistanis are also not the same. I think it gets very easy for us to just paint them all as one kind of big PTI fan club. The reality is that so much more than half of our remittances are actually coming from those who are based in the Middle East, and not जिसको हम semi skilled या unskilled labor कह सकते हैं। तो एक तो क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी की बात भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आती है ना कि शुड दे हैव द राइट टू वोट एक्सेट्रा। मेरा इस पे एक बड़ा it's a very simple, the stronger your ties are to your country, and you can create those tiered approaches, the stronger your ties are to your country, the more voice you should have in any political opinion. That's as simple. If you have moved to Canada or the United States or anywhere else in the world जहाँ पे आपका पाकिस्तान आना कम हो गया है, जहाँ पे आपकी फैमिली निकल चुकी है, जहाँ पे the only extent of your interaction is maybe by the way of property that you own, then I don't understand what is this dindora that you are petrifying for the right to vote. You don't live here, you don't suffer under the regimes that we have been exposed to, but you're very happy to sit there and have barbecues and barbecue your passports even when Imran Khan gets ousted. What picture are you presenting to the world? At the end of the day, आप शायद हो सकते हैं आप बहुत पेट्रियोटिक पाकिस्तानी है, nobody is asking you to forgo your identity. You can have multiple identities within your own person, and it will remain forever. लेकिन थोड़ी तमीज, थोड़ी understanding for the fact that not all Pakistanis are the same, not all overseas Pakistanis are the same. जो हम लोग हैं, जो that we continue to live in this country, क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं छोड़ के चली जाऊं? I mean, like, I think of all the people, I don't mean to sound arrogant, नहीं है अपॉर्चुनिटीज, कल ही 6 रिश्ते आए हैं I can go. हाँ I can सिंधी, go. आपको लगता है लेकिन सिंधी मैं नहीं अमेरिका में जाना, नहीं है? ग्रीन कार्ड नहीं होता सिंधियों के पास? जी ऑफ कोर्स होता है। अगर आपको एक जोक बता दूं, देयर इज अ सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आप जरा गूगल कीजिएगा उसको। तुमने आज तक ये कोशिश भी नहीं की कि अपने भाई की शादी करा दो, तो कि कोई उसको भी सिंधी अमेरिकन पसंद आ जाए, मैं भी बैठूं हांडी न्यूयॉर्क में बैठ के कढ़ाइयाँ खाऊं। आप शेम ऑन यू। सिंधी एसोसिएशन प्लीज मुझे ऐड करें। हाँ, मैं आपकी सीवी फॉरवर्ड करती हूँ उधर। थैंक यू। लेकिन कहने का मकसद यही है कि there's a certain loud voice or loud picture that gets painted of overseas Pakistanis, which is not the best representation of who the overseas Pakistani is. We have so many skilled people, Uzair Yunus type log hain, jo matlab, they're so smart, they're so intelligent, they represent the country so also, well. Remember that. हाँ ठीक है मैं वो बात ही नहीं कर रही but the point is, be like them.
Don't be grilling your passports in barbecues because you're so upset. वो जमाइमा की मदर के घर के बाहर जाके तमाशे हो रहे हैं, ये कौन सी तमीज है? मतलब you guys move to so called the more civilized countries, the more western countries, the more progressive countries. ये आपकी हरकतें हैं यार, for God's sake. It is often said that I hate PTI or I hate Imran Khan. I don't. I hate the elite, uninformed PTI supporter who thinks कि अपने elite bubbles में रह के जनरेटर से बिजली चलाकर 6 गार्ड्स रखकर प्राइवेट सिक्योरिटी करके, जिनका कोई गवर्नमेंट से इंटरेक्शन नहीं है, जो ना कुछ फॉलो करते हैं ना किसी को देखते हैं, उनको बस अच्छा लगता है कि यार ये बंदा हैंडसम है, he represents us well, we're proud to go internationally and say Imran Khan is our president because वो अंग्रेजी बोलता है और ट्रम्प से छाती बड़ी करके बात करता है. They're willing to sacrifice the lives of hundreds of people, and it turns into tangible results, right? हम criticize करते हैं इमरान रियाज खान को एक flimsy FIR पे अरेस्ट किया, हम condemn करते हैं, नहीं करना चाहिए. बट जब जर्नलिस्ट को गोलियां लग रही थी तब आप लोग मजाक उड़ा रहे थे, तब लीडर जा के मजाक उड़ा रहे थे, रेप जोक्स हो रहे होते हैं जर्नलिस्ट के बारे में. So all of these are ground realities, and people who are not that informed think it's as simple as, you know, just being like या तो आप करप्ट हैं या तो आप हक और बातिल की जंग चल रही है और अमर बिल मारूफ की रैली पे हम लोग खड़े हुए. It's fine knowing everything that you know, that you still support PTI, that's your prerogative. But वो जो एक elite smugness है from people who are not related to politics, have nothing to do with politics, don't even live in Pakistan, live in their own tiny 600 yards defense bubbles. Maybe read a book or two before you start, you know, calling others. You know, there's this line from one of my favorite TV shows. That's actually the reason, but I think it's the reason many of us do what we do. Lekin that line went, there is nothing more important to a democracy than a well-informed electorate. And I think हमारे पाकिस्तान के लिए तो ये it would apply to any country, but in the Pakistani context, and especially in the new age where social media, you know, algorithms and philosophies are so geared towards post-truths and kind of feeding you your own versions of reality, there is nothing like, there is such an important need now for discourse that considers the facts, that's not based on emotional rhetoric. मतलब आपने क्या करना है, आपने अचार डालना है उसकी हैंडसम लुक्स का, what is it going to achieve? Why can we not have a good conversation? There was this excellent article that came up because I get a lot of, मेरा जो fundamental issue with the PTI है बहुत सारे, लेकिन one of them has been, you know, the rampant misogynistic narrative that has taken hold at a national level. That's something that just bothers me. It bothers my very existence, right? And there was an article, and a lot of overseas ho ya local ho, Pakistan, PTI has a huge female support base also. And there was this excellent article that came out, I think it was published in Tribune, but I can check again. वो उसका नाम ही एक था, PTI and Women. Basically, it was a scorecard of the PTI's performance on policies as they apply to women. So ek to failure definitely was on the fact that not enough has been done to create a secure environment for women. Pakistan has consistently ranked as one of the worst countries in the world for women to live. This is not a fact. This is not a opinion. This is a fact now. And the fact that there has been limited legislation and implementation of that legislation to do anything about that. But the other most damaging part is this whole men are not robots and agar ladkiyan parda karengi to wo theek rahengi, and you know, all these kinds of nonsense opinions that frankly, you know, you can expect them from boomers, and you do expect them from them because wo unhi ki taraf se aati hai. And there is somehow still there is this willingness to forego all of that because the chor daku narrative is so much more powerful. कि ये जो आपको as a woman living in this country रोज आपको एक, and by the way, like, you know, it's one thing to say कि oh, this is my personal opinion as a Prime Minister of Pakistan, I think women are shit, whatever. लेकिन that directly gives other people the power and the influence and the confidence to be able to voice these and echo these opinions more publicly. You see it happen. आपकी top leadership level पे अगर आपको एक misogynist आएगा, it will trickle down. Trump क्या था, बोजो क्या है, ये these people brought, Modi even, he's brought racism out of Indian homes and into the public, and once it's out there, it's very hard to rein it in.
And so I think the PTI has done exactly that for misogyny. They have done a damage and a disservice to the women of this country in ways that it will take decades to bring it back to where we were. मैं आपको अपनी एक रिसर्च से छोटा सा एग्जांपल दूं जो मैंने बहुत रिसेंटली चीज नोटिस की है, जो कि मतलब इट रियली शुक मी टू माय कोर कि ये अब पाकिस्तान है। तो उसमें ये है कि हम एक प्राइवेट स्कूल चेन के साथ काम कर रहे हैं, नाम नहीं मैं लूंगी, तो उसमें उन्होंने नहीं तो उन्होंने तो हम लोगों ने basically it's a pedagogical intervention, so we were trying to see that if we pair two students together और अगर हम उनको encouragement दें from the teacher to work together and improve their scores, does that actually end up improving their scores? तो अब हम जिस चेन के साथ काम कर रहे थे, वैसे तो पंजाब में बहुत कम schools co-ed हैं, कराची is very different, पंजाब तो segregated ही है, काफी बच्चों को बड़ी जल्दी sexualize कर देते हैं। सॉरी मैं ये बंद नहीं करी, मेरे मुंह पे बहुत धूप आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, it looks great, yeah. But also because साल में सिर्फ 6 महीने ऐसी धूप आती है, तो उसको मैं I don't deny it at any level. तो अच्छा, तो मैंने क्या किया, and again मैंने सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान कितना बदल गया है या मुझे निकले हुए कितना टाइम हो गया पाकिस्तान से। So हमने जो कोएड क्लासेस थी, लड़का लड़की को इकट्ठे पेयर कर दिया। आई एम टॉकिंग grades 3 to 8 के बच्चे। This created such a big issue कि आपने and this is all the activities that they're doing, they're all online, they're not even, these two kids are not even physically together, it's all happening online. Parents, school administration, everybody wrote letters to us, said कि हम आपकी ये research बंद कर देंगे। आपने सोचा कैसे कि आप हमारी grade 3 की बच्ची को grade 3 के बच्चे के साथ पेयर करके कहेंगे कि मैथ के सवाल इकट्ठे सॉल्व करो। So this sexualization, it's so institutionalized, and I'm not talking about public schools, I'm really talking about this elite private school chain. So ये आपकी upper middle class ही के बच्चे हैं जिनके साथ ये हो रहा है। So that has been a really stark reminder for me कि हम कहाँ जा रहे हैं। Nayab, do you want to weigh in on this as one of the organizers of the Aurat March and everything that Aurat March has faced during PTI's tenure? Oh, absolutely. I think कि ये unimaginable था. To be very honest, I'll tell you something जो मेरे लिए बहुत shocking था PTI government के tenure की एक चीज। मैं ये समझती थी, और मतलब मैं कभी भी I was never a supporter, so I was always very skeptical. लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हमारा जो skepticism था, उससे भी 10 गुना ज्यादा खान साहब ने जो है वो ऐसी चीजें की कि हम शॉक में चले गए। मैं समझती थी कि क्योंकि उनकी एक अर्बन अपर क्लास किस्म की सपोर्ट है, नॉट दैट कि यू नो दैट इज एन इंडिकेशन कि अर्बन अपर क्लास लोग बड़े सपोर्टर्स होते हैं ह्यूमन राइट्स के या किसी चीज के, बट फिर भी हर हुकूमत जो है वो पैंडर करती है, थोड़ी बहुत लिबरल पैंडरिंग करती है या इस तरह करती है। जो एक्चुअली उन्होंने किया, मुझे लगता है कॉन्शियस डिसीजन था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राइट विंग सपोर्टर बेस को ही केटर करना चाहते थे और उसी को ही रिटेन करना चाहते थे, और मे बी दैट टाइज इन विद हिज पर्सनल बिलीफ सिस्टम एज वेल, बट व्हाट ensued was absolutely shocking। क्योंकि आप अगर देखें, ठीक है पाकिस्तान मिसोजिनिस्टिक है, ठीक है औरत मार्च ऑर्गेनाइज कराना हमेशा ही मुश्किल होना था, लेकिन जिस तरह से पीटीआई की हुकूमत ने उसके अंदर रुकावटें डाली, नॉट जस्ट ऑन अ ग्राउंड लेवल के, जितना मुश्किल एनओसी लेना होता था, जिस तरह से हमें चक्कर लगाने पड़ते थे, उसके बाद जब केसेस बने, ब्लास्फेमी के केसेस बने, पता नहीं क्या क्या केसेस बने, तो कोई भी रियासती जो नुमाइंदा था वो मदद करने को तैयार नहीं था। और साथ ही साथ इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो नैरेटिव बिल्डिंग की गई, अगर आप देखें, ठीक है ओवरऑल भी लोग मिसोजिनिस्टिक हैं व्हाटएवर, लेकिन एक्सक्लूसिवली क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है विद द ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी, विद एक्टिविस्ट, तो जिस तरह से इंसाइट किया गया और जिस तरह से सबसे टारगेटेड हेट्रेड और विट्रियल
पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से आया, आई थिंक इट वाज जस्ट समथिंग अनप्रेसिडेंटेड दैट आई हैड नॉट विटनेस्ड इन माय लाइफ टाइम। और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए, इवन एज समबडी हु वाज नॉट अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान, मेरे लिए शॉकिंग था कि वो वजीर आजम होते हुए इतना भी नहीं कह सके कि यू नो हर किसी का हक है मतलब एहतजाज करना, यू डोंट हैव टू सपोर्ट इट। ठीक है, आपकी अगर एक कंजर्वेटिव वोटर बेस है, आप उसको पैंडर करना चाह रहे हैं, तो आप ये मत कहें कि आप उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन आप इतना तो कह सकते हैं ना कि एहतजाज का हक हर किसी का है। आप मतलब इस तरह की चीजें तो आप कह सकते हैं। आप द फैक्ट कि आपके सिटीजन्स के साथ ये हो रहा है, फिर आप जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वो लोग और ज्यादा राइल अप हो रहे हैं और वो और मतलब इट वाज एन एब्सोल्यूट नाइटमेयर। और ये 2019 से शुरू हुआ और उसके बाद हर कंसेक्यूटिव साल ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होता गया। मैं 100% श्योर हूँ कि जो रिजीम थी वो इसके अंदर एक कल्यूडर थी। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि औरत मार्च हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि उनके डीएनए के अंदर एक नफरत है विद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। हर किसी को वो समझते हैं कि या फॉरेन फंडेड है। और फिर खान साहब का जो एक नैरेटिव था कि हमारा कल्चर और हमारी सकाफत और उसके खिलाफ वर्जी और औरतें ऐसी नहीं होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो ये सारी चीजें कर रहे थे। सो एब्सोल्युटली अबिस्मल। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि बॉयज क्लब भी बहुत पर्सनल, उनके इर्द गिर्द भी जो उन्होंने अपनी वो रखा हुआ है, वो उसका भी अगर आप देखें ऑप्टिक्स तो यही आते हैं कि वो एक बॉयज क्लब ही है। और उसके अंदर बहुत मुश्किल है खवातीन का उसके अंदर जाना और मतलब कंफर्टेबल फील करना। और जो परसेंटेज है जितनी वो नॉमिनेट, वो तो ऑन रिकॉर्ड देखे ना, पीटीआई का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है 2004-5 से तो आज तक उन्होंने किसी वुमेन्स राइट्स बिल के हक में वोट नहीं किया। सो आई मीन दिस इज, दे हैव अ टेरिबल ट्रैक रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू वुमेन, एब्सोल्युटली टेरिबल। मुझे लगता है अनमैच्ड टेरिबल है। चाइल्ड मैरिजेस पे नहीं वोट कर सकते थे वुमेन्स राइट, तो फिर दूर की बात। जी, चाइल्ड मैरिजेस पे नहीं कर सके वोट, उन्होंने बोला काउंसिल ऑफ ऑफ इस्लामिक कोर्स। और आइडियोलॉजी। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के बिल के साथ क्या हुआ, देखे ना, कोई पॉलिटिकल विल ही नहीं है। ये तो आप अगर बैठे कभी किसी खातून लॉ मेकर के साथ या सेनेटर के साथ, तो वो आपको बताएंगी कि पहले ही कितना मुश्किल है। मैंने एक तो इस तरह की कहानियां यू नो विद women that I look up to, like for example सेनेटर शेरी रहमान, मतलब इस तरह की बातें जब मैं उनसे पूछती हूँ कि किस तरह आप पास करवाते हैं और क्या होता है, तो वो यही बात है कि जी ये इन इट सेल्फ एक लड़ाई होती है, जो पहले आप मतलब आप अपने इर्द गिर्द के स्टेक होल्डर्स के साथ लड़ते हैं, फिर आप इसको लेकर जाते हैं उस पब्लिक फोरम के ऊपर, फिर वहां पे लड़ाइयाँ होती हैं, फिर वहां पे नेगोशिएशंस होती हैं। तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर दफा ही उन नेगोशिएशंस की गलत साइड पे क्यों होती है। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। चाहे वो 2016 का जो विमेन राइट्स वाला जो बिल था, या जो 2004-5 का है, या खान साहब की जो पब्लिक स्टेटमेंट्स है, आई मीन अबिस्मल ट्रैक रिकॉर्ड है। और वही बात है कि द ट्रेजेडी दैट दे हैव अमास्ड सो मच फीमेल supporter base, absolute tragedy. Minahil, you're probably seeing this from the outside a little, but what's your take on this? Because maybe over the years we've seen कि पीटीआई की मिसोजिनी जो बढ़ती जा रही है और पीएमएलएन की थोड़ी कम हो गई है। नॉट टू से कि सिर्फ पीटीआई में मिसोजिनिस्ट्स हैं, पीपल लाइक तलाल चौधरी, आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह एंड द शिट देव सेड, बट इनिशियली भी जब लम्स के लोग रैलीज पे जाते थे, औरतें जाती थी, पीएमएलएन से जिस तरह का नैरेटिव आता था औरतों के बारे में उस रैली पे, एंड इट्स शॉकिंग कि पीटीआई अब इस तरह की बातें करती है, क्योंकि मे बी दे वर वन ऑफ द फर्स्ट मेन स्ट्रीम पार्टीज हु वर अटैक्ड फॉर हैविंग वुमेन ऑन देयर रैलीज, एंड वो सीन एज अ ग्रेट थिंग कि औरतें भी जा रही हैं और पब्लिकली सेलिब्रेट भी कर रही हैं, डांस भी कर रही हैं, वो सीन एज अ वेरी गुड थिंग। बट वो पीटीआई और इमरान खान और सब कहें, खैर गॉड नोज, बट फ्रॉम द आउटसाइड यू फील लाइक कि पीएमएलएन की मिसोजिनी थोड़ी कम हो गई है विद मरियम नवाज सॉर्ट ऑफ बीइंग एट द हेल्म? विशफुल थिंकिंग है मेरी है। मुझे लगता है मतलब पॉलिटिकल पार्टीज आर आल्सो जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो मुझे तो लगता है जनरली बहुत मिसोजिनी बढ़ गई है पाकिस्तान में। एंड आई ऑलवेज करेक्ट माई सेल्फ कि ऐसा तो नहीं है कि अब मैं एक फर्क जगह रहती हूँ तो मैं वापस आती हूँ तो मैं उसको उस लेंस से देख रही हूँ, बट नो, आई थिंक ऑल द फील्ड वर्क दैट आई हैव डन, माई ओन सर्कल्स, एक तरह से
पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है. जो लोग मिसोजिनिस्ट है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, और जो प्रोग्रेसिव हैं उनमें से वो उनका दिमाग और खुल गया, और वो तो the two worlds don't talk to each other, I feel. So I think बिल्कुल विशफुल थिंकिंग ही है ये समझना कि PMLN जो है वो कम मिसोजिनिस्ट हो गई है. आई थिंक जनरली सोसाइटी के कुछ एलिमेंट्स, and I think that has to do with just the country becoming more like religiosity increasing. I think बहुत TLP has played a big role in that कि वो बहुत ज़्यादा एक religion पे focus मुल्क का बहुत बढ़ गया है, जिसका direct consequence has been just the way women are treated in the country. That is my take as an outsider, and especially as somebody who visited Pakistan after say 3 years ये COVID के बाद. तो बिल्कुल like the country felt different, the bazaar felt different, the women felt very different. There were far fewer women than I remembered. But again, I kept correcting myself कि ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे public spaces में बहुत ज़्यादा औरतें नजर आ रही हैं तो पाकिस्तान में अब कम लगती हैं. But ऐसा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा लगा कि. I was shocked to know that some people told me कि हुंजा में जहाँ was very common to see women out in public, you don't see women out in public now, not because उनका culture बदल गया है, क्योंकि rest of पाकिस्तान से लोग जो हुंजा में जाते हैं और जो वो हरकतें करते हैं उसकी वजह से उनकी औरतें अब पब्लिक में नहीं आ सकती. मतलब हमें शर्म नहीं आनी चाहिए एज अ कंट्री के हमारे मुल्क में ही जहाँ औरतों को थोड़ा बहुत पब्लिक एक्सेस था वो भी हमने ही जाकर छीन लिया. फिर somebody who writes about gender and misogyny at length, and I don't know how you get the time or the mental health to do the emotional labor that you do. Please educate us. No, मतलब you know अभी recently Turkey में भी एक trend चला था Pakistanis get out or something of that nature, because Pakistani men are going and that you know they're making selfies and TikToks of themselves with Turkish women in the background. And Turkey, by the way, is one एक तो generally Pakistan, right? तो मेरा कहने का मकसद ये कि you know the fact कि misogyny बढ़ी है इसमें I think कोई doubt नहीं है. Misogyny has definitely increased. मिसोजिनी किस तरह से बढ़ती है जब आपकी लीडरशिप और जब आपका कल्चर उसको इनेबल करता है तो इट कम्स आउट मोर इनटू द ओपन. दैट्स जस्ट द सिंपल रियलिटी ऑफ हाउ मिसोजिनी वर्क्स. जितना आपका अब यू नो लाइक फॉर एग्जांपल इन कॉर्पोरेट सर्कल्स you increasingly have trainings about you know gender sensitization and how to talk to women and what can be taken wrongly and what is the right thing to say. But at the end of the day all that goes straight down the drain the second you have a misogynistic CEO in the office. Because you know, okay, I'll give you an example. मेरे पास in one of my previous organizations, one of my colleagues was expecting. She was 8 months pregnant, and Sindh का law मेरे ख्याल में I think it is a 3-month maternity leave policy. So because she was in her 8th month and it was her first pregnancy, she's already a very skinny girl. तो वो बहुत उसका you know you could tell that she was getting tired and she just wanted it over with. तो सब उसके लिए बड़े कंसर्न में पूछ रहे थे कि तुम कब जा रही हो, when are you taking your leave, because you can actually take it you know even a month prior to what your due date is. तो she said हाँ बस मैं सोच रही हूँ, I'm just gonna take it soon etc. तो इतने में एक आदमी आ गया. उस टाइम पे मैं भी एक मैनेजर लेवल की रिसोर्स थी, ये बंदा भी एक मैनेजर था, but he was more senior than me, as in he had 2-3 years on me or something like that. तो he came in and he was just like तुम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हो. तो हमने कहा कि we were just asking her कि ये mat leave कब ले रही है ना. तो he was just like कि अच्छा कब जाओगी और कितने टाइम के लिए जाओगी. तो she said मैं इस दिन को जाऊंगी और मैं 3 months के लिए जाऊंगी. And he was just like मेरे ख्याल में mat leave 3 months की तो नहीं होनी चाहिए. And I said yes, I agree, it should actually be for 6 months at least, because you know in the developed world तो 9 months की भी मिलती है, 1 year की भी मिलती है. It's not enough time to recuperate and get adjusted to the life, to the fact that you know you now have to take care of, if you're a nursing mother especially, you have to take care of literally feeding another person. And he was just like नहीं मुझे तो लगता है कि ये सब बकवास है, तुम लोगों को सिर्फ 1 महीना मिलना चाहिए और बाकी जो तुम 2 महीने लेती हो ये तुम you don't earn it, तुम्हारी हलाल की कमाई नहीं कैटेगराइज करती. He made that comment in the presence of a member of the जिसे कहते हैं ना senior leadership team जो होती है, so the people who only report into the CEO.
एक वो आदमी साहब खड़े थे and एक और general manager also very senior to us खड़े थे, and he had the confidence to say that because who's going to stop him? At the end of the day, it's what Minahil said, right? Society, like organizations are just a reflection of society. This is the level of misogyny कि आप एक खातून को एक महीना सिर्फ देना चाहते हैं, जो जो कानून है, जो कानून कहता है कि उसको 3 महीने मिलने चाहिए. The law has decided that she will get at least 3 months off, but no, your misogynistic opinion is more important, and you have the confidence to come out and say, oh no, you should be fine in 1 month. I've seen women working. He said this, then applied for a 3-month paternity leave after that. मतलब this and this is what I mean. And ये in the last 3-4 years ही हुआ है. This is an incident. You know, you can correlate it with the change that came politically in 2018. कि इस तरह की चीजें, these kinds of instances became more common. I travel a lot, and I travel a lot alone inside Pakistan. That's always been the case. You know, I've had a lot of freedom. I always had to travel for work. जो मुझे लाहौर में harassment शायद 2013 में होती थी, अब मुझे जाते हुए honestly अब डर लगता है. Because वहाँ पे मैं एक दफा गई थी in 2019. आप लाहौर सेफ्टी के लिए चली जाएंगी? हाँ, I'm sure. कहने का मकसद यही है ना कि the confidence of people to come out and, you know, objectify, stare, harass, everything is just, कोई पूछने वाला ही नहीं है. This has become such an ingrained part of our culture now. मुझे तो खैर 2-3 लोग थे लाहौर में, उन्होंने मुझे बड़ा डिफेंड करने की कोशिश की कि नहीं, ये पूंगी तो हमारा नेशनल स्पोर्ट होता है. मैंने बोला चलो आप बैठो मेरे साथ 2-3 घंटे, मैं आपको सिखाती हूँ नेशनल स्पोर्ट क्या होता है. तो it's just it's a tragedy of proportions. Did you like stare back at them? What did you teach them? No, I spoke to them. Achha. I don't think it had any impact, but I don't know. मैं आपको बताती हूँ नेशनल स्पोर्ट क्या होता है. हॉकी स्टिक को यूं पकड़ गोल यूं करते हैं हम. Shit यार. I ranced them basically for 2 hours. No, I think teaching feminism to a man is like teaching calculus to a dog. I mean, you can try. Yeah. फायदा तो नहीं होगा, and most likely he will still try and hump your leg at the end. So and the thing is, you know, there is an economic case to integrating women. Like, they are literally your biggest untapped resource, and you are just trying to push them further into, what are you going to achieve? Like, you know, this is why sometimes I wonder, and that was the question that I asked Nayab, what is the competence level of the administration to understand कि इसको करने से आप अपनी, you are going to impact your macroeconomic indicators. You are going to push the country into a more constrained, you know, mode of operations than it already is, and that's not something that we can afford. Nayab. Oh no, I'm not asking this question again. She already answered it, but I was just like, you know, that's where the frustration comes from. कि इन लोगों को समझ क्यों नहीं आती है बात? पता ही नहीं, आप आती है समझ, इन लोगों को नहीं आती. क्या मुश्किलात पेश आती हैं? I think definitely, like I said, if you look at things pre-2018, मेरे ख्याल में बहुत clear cut एक across political parties actually. If you look at Punjab under Shehbaz Sharif from 2013 to 2018, बहुत सारे ऐसे मंसूबे थे जो बहुत women centric थे, और People's Party तो हमेशा से ही, I mean, has been the only and I think the biggest force that talks about women and their inclusion और हर लिहाज से. तो मेरे ख्याल में ये definitely एक effort है. मैं definitely ये समझती हूँ कि the corridors of power, of course, because they're still very very male dominated and they're still very male centric, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा और female perspectives चाहिए. देखिए इतना इम्पोर्टेंट है, आप अगर यहाँ पर जाके लेजिस्लेटिव हिस्ट्री निकालें और ये जो कमिटीज वगैरह बनती हैं जिनके अंदर फिर खवातीन हैं पार्टी से, और वो तो आप देखें कि वो कितना जबरदस्त काम करती हैं, चाहे फीमेल पार्लियामेंटेरियंस हों, फीमेल सेनेटर्स हों, एंड देन द काइंड ऑफ वर्क दैट दे डू, और जिस तरह से वो खवातीन
रिप्रेजेंट करती हैं, तो उन्हीं आने से, उन्हीं के कॉरिडोर्स में आने से ही इतना बड़ा एक शिफ्ट आता है, लैंग्वेज का भी शिफ्ट आता है और पॉलिसी के अंदर भी शिफ्ट आता है. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बहुत इम्पेडिमेंट्स हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल अब तो देखिए नेसेसिटी. आई मीन इन दिस डे एंड एज there is no way कि मतलब other than like one or two parties जिनका हमें पता है कि उनका narrative ही यही है कि हम तो खवातीन को निकालना ही नहीं चाहते life and all that. I think इसके अलावा nobody else can have an excuse for not bringing their women into the discourse. I think 2 घंटे हो गए. We should move towards the end, but I feel like before we started recording, we had a really good discussion. So if we may just talk about के हमारी generation को जो बुरा भला कहा जाता है, I think जो young ones सुन रहे हैं, they don't realize how terrible and screwed up the circumstances were in which we grew up. Discussion यहाँ से शुरू हुआ था कि हमें अक्सर ये criticize करता है, why weren't you criticizing PPP during 2008? और मेरा response ये होता है कि 2008 में मैं हॉट था, तो मैंने नया DHA फेज 8 और लाहौर में लम्स के बाद बेदियां रोड डिस्कवर किया था. तो मेरा कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, मेरा ये प्रिविलेज बबल है. बट बियॉन्ड द स्टूपिड थिंग्स, आई थिंक Preh also had a good point about terrorism. So let's maybe end the discussion on that, and if Preh wants to talk about her personal experience as well, let's maybe talk about that. मतलब we were just basically talking about how हमारी generation में I am quite confident that mental health issues are endless because of the environment that you were exposed to while growing up. जो Karachiites का एक certain level of desensitization है, जो to some degree probably Peshawar के citizens में भी बहुत ज़्यादा है, क्वेटा में तो है ही है. Just constantly living day in and day out around conflict and around bomb blasts and all these things. It takes a severe toll on how you develop emotional relationships, how you develop emotional capacity. My own father was very critically injured in a bomb blast. It was 2007 when Benazir Bhutto came back to Pakistan after her self-imposed exile. Yeah, I think Bihar mein 200 log lost their lives. Close to 200 people lost their lives. More than 500 were injured. To this day, I cannot talk about it. मतलब आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछेंगे उसका तो मैं आपको नहीं बता सकती. Not without breaking down. I can write about it. I can share it in a note, but I can't have that conversation without breaking down. And I actually did break down once in front of my boss, no less. It was very embarrassing. But when you live with this constant fear that people are leaving the house and you don't know if they're coming back, that has a severe toll on our ability to absorb and analyze information in a rational manner. It has an impact. And I think जो हमारे ऊपर जो criticism आता है कि आप लोग ये हैं, आप लोग वो हैं, there is recently effect इतना matter करता है इन चीजों में because we've been a little, so far it's been a little dull on that front. And so we've forgotten what the impact has been while we were growing up. I was 17 years old when I almost lost my dad to a bomb blast. At the same time, around the same time, we lost my cousin to a carjacking. मेरे अबू के छोटे भाई किडनैप हुए थे कराची की स्ट्रीट से. Like we have lived through all this stuff, and it affects you emotionally, it affects you mentally, it affects your ability to comprehend and absorb information even. So a little slack, a little compassion never goes amiss. क्योंकि हम लोग अगर अभी भी इस सब के बावजूद, मेरे ख्याल में ये एक commendable चीज है, and I think it should be appreciated. And the fact that there are still so many people at our age group who want to contribute meaningfully to reform, to a more inclusive political process, to seeing things generally improve for people in the country who have not seen improvement for many decades. I think उस sentiment को within the constraints of the environments that we've grown up in, उसको थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करनी चाहिए. ये labels don't help anyone. मैं बहुत labels इस्तेमाल करती थी. I've been trying also to curtail my use of them, because I think they just add to, as Minahil said, they add to added polarization. But yeah, cut everyone some slack. Everyone has grown up through a really rough
couple of decades in this country. Minahil? अग्री करती हूँ मैं जो प्रे ने कहा है उसी से अगेन मिनाइल को तो हमने लाइव रिव्यू रखने के लिए लाइव कमेंट सेक्शन है ये पॉडकास्ट का जिस तरह हम बात कर रहे हैं मिनाइल के रिव्यू भी आ जाए यार मेरी ट्रेनिंग ही ऐसे हुई है सारी मैंने 5-6 साल पीएचडी की चीजें रिव्यू करके ना so that's all I'm good for नहीं मैं बिल्कुल एग्री सारी बातों से करती हूँ very very similar experience growing up in Lahore also you know this one incident that I've told many people I've met in North America also कि आर्य बाजार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो my dad called me and said कि तुम इधर से आ रही हो तो इधर से ना आना वो मेन हनी ब्रिज से आ जाना कैवलरी से आ जाना कि वहां पे ब्लास्ट हुआ है अभी तो मतलब you know these things just became so normal कि चाहे सिनेमा मूवी हमने देखने जाना है लेकिन ब्लास्ट ना हो जाए या हो गया या जो भी तो प्लान चेंज कर लो मे बी अगले वीकेंड चले जाएंगे सो आई थिंक वी ग्रू अप विद ऑल दोस थिंग्स बट हैविंग सेड दैट आई थिंक पॉलिटिकल एपैथी जो है वो इट्स लाइक डायरेक्टली कोरिलेटेड विद प्रिविलेज अगर आपको जरूरत नहीं है एक्टिव होने की जरूरत नहीं है क्रिटिक करने की तो आप कभी नहीं करोगे तो आई थिंक अगेन जस्ट tying it back to the initial argument around local governments and improving local governance आप जहाँ हैं आप वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए भी यही पैगाम है तो आप वहाँ की पॉलिटिक्स में हिस्सा लें और पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का ये मतलब नहीं है कि आप ही को नेसेसरीली कैंडिडेट बनना है बट आपको आई थिंक पता हो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है आपकी पब्लिक सर्विसेज कहाँ से आ रही हैं क्या हो रहा है तो आई थिंक उसके इट्स वेरी इजी टू इफ यू आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम एंड द सिस्टम इज वर्किंग फॉर यू टू नॉट क्वेश्चन मेनी थिंग्स अराउंड यू तो लाइक रिगार्डलेस ऑफ योर सर्कमस्टांसेस मेरा तो यही मानना है कि जरूरी है पता होना कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है Yeah, I agree. हम थोड़े privileged bubbles में बड़े हुए हैं. People of certain class या people in Waziristan, Quetta, they don't have an option. You must be 6, 7, 8. You don't have an option to be apolitical. That being said, हमारे अपने multiple riots I've driven through. Multiple times a gun has been pointed towards me. And अभी वो recently एक video आई थी निशात पे. I don't know if people saw it. This guy was walking towards एक वो उनकी मोबाइल चोर. एंड उसने शूट कर दिया स्ट्रेट इनटू द फेस राइट एंड मैंने एक दोस्त को दिखाई जो पाकिस्तान में नहीं है एंड ही वाज लाइक ये इसकी तरफ चल रहा था एंड आई वाज लाइक आई डिडंट इवन रजिस्टर दैट एज अ थिंग क्योंकि आई एम सो यूज्ड टू सीइंग गन्स आई एम सो यूज्ड टू हैविंग अ गन पॉइंटेड टुवर्ड्स मी मेरे दिमाग में वो आइडिया नहीं आया था कि जस्ट बिकॉज उसके पास गन है ये शूट कर देगा those two things as obvious as this may sound immediately as a reaction to something वो मेरे ब्रेन ने कनेक्शन नहीं बनाया था क्योंकि इतने कॉमनली मैंने गन्स देखी हैं लेकिन इतने कॉमनली किसी को शूट होते हुए नहीं देखा इट्स कॉमन राइट जहाँ आपने बात की शारे फैसल की दूसरी साइड पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए दूसरी साइड से चलते हैं व्हेन बेनज़ीर डाइड आई वाज आउट ऑन द रोड्स राइट लाइक मल्टीपल पीपल केम विद गन्स मल्टीपल टाइम्स पीपल थ्रोइंग रॉक्स इट ऑलमोस्ट लाइक अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊं वो एक गेम खेल रहा हूँ जैसे मैं कि यार यूं इस लेन में रॉक्स इस लेन में एक बस एंड आई एम honestly saying this is exactly how it happened इस लेन में बस चल रही थी so I was like अच्छा मैंने अब इस लेन से जाना है इस लेन में वो पत्थर मार रहे थे तो मैंने इस लेन से जाना है it's almost like कोई crazy टैक्सी का मैं गेम खेल रहा था एंड इवन जो कारसाज वाला ब्लास्ट है मैंने आप लोगों को ऑफलाइन बताया था फ्रेंड ऑफ माइन वाज लाइक हम घर में बैठे हुए थे एंड सडनली बाग में आके 2-3 टांगे गिर गई किसी की and it might sound callous it might sound like the worst way to describe but how do you grapple with that reality with a tinge of humor because he said it humorously is probably the only way he could grapple with the reality कि आपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए और body parts are raining in your garden and you have to then pick them up the next like you can smell burnt bodies and it's normal it's common कि हाँ यार ये चीजें तो होती हैं so obviously we're all very fucked up we can talk about how fucked up I am for ages but let's leave the final message कौम के लिए message or your take on growing up in this world in this circumstances Nayab let's go यार पाकिस्तान के बारे में मुझे तो लगता है कि जितनी भी जनरेशन्स हैं हर जनरेशन का अपना कोई ना कोई ट्रॉमा है such is the tragedy and such is the legacy मुझे लगता है कि आप किसी भी जनरेशन के इंसान से बात करें
आप अगर ज़िया वाली जनरेशन से बात करें, उनका अपना ट्रॉमा है, उनसे पहले वालों का अपना ट्रॉमा है. तो अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क ही ऐसा है कि जिसके पॉलिटिकल instability or tragedy has become entrenched in our identity, and along with that, obviously बहुत complicated है. I think this is why we love this country also so much, because it's just so complex and maddening. इतनी अच्छी चीजें भी है कि मैं ये समझती हूँ कि इतनी resilience कैसे हो सकती है एक कौम के अंदर, कि इस तरह की चीजें हमने फेस की है, generation upon generation, you know, tragedy, trauma, so much, but we've also managed to, you know, I don't know, go on. So I that's why I think that we have the most complicated relationship with our country, and we have the most deep love for our country as well, because it has persisted despite so much. तो आगे मैं बस ये चाहती हूँ कि अल्लाह करे कि जिस तरह हम एक एम्पैथी, हर जनरेशन को एक के साथ एम्पैथी दिखानी चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने चैलेंज है, और मेरे ख्याल में कोई किसी को कुछ ये नहीं कह सकता. हर दौर में कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस आते हैं, बट लेट्स रियली होप कि दिस another new generation of Pakistan that doesn't grow up under tragedy. Like that would be the absolute dream. One generation that is unscarred and you know, actually gets to grow up under normal circumstances. So that's where I want to leave it at. मुझे लगता है वो जनरेशन नायाब, इस गम को नया क्या लिखना. जी निहाल. नहीं, मैं तो कहना कि थी वो जनरेशन में से सागा में बड़ी हो रही है असल में. I'm happy you all supported Mrs. Agha. Yeah, man, it's tragic. You're right. We can't really grapple. We think, especially I do think, कि grandfather generation के जितने issues हैं. But how do you grapple with the reality कि एक train आ रही है और उसमें सबके सर कटे हुए हैं? Like, how do you live with that reality, right? Like, I know we've all read about it, but if you just take a second and put yourself in that position, कि आप ट्रेन स्टेशन से अपनी बहन को, अपने भाई को लेने गए हैं, and that's what you see. Like, this is people's reality. This is what they grew up with. Then you have 71. So it's, yeah, I think हम जो complain कर रहे हैं, maybe हमारी previous generation बोलेंगे आप लोगों को क्या मसले हैं. But जो Gen Z है, I love your passion. I love your zest for social issues and human right issues. लेकिन यार मतलब अगर हम बुढ़े हो गए थोड़े बहुत, तो प्लीज हमें भी थोड़ा क्रेडिट दे दिया करें. कुछ चीजें हमें पता ही होंगी. एंड आई गेस इवन व्हेन वी वर 18 एंड इफ पीपल केम टू अस एंड सेड नो दिस इज व्हाट, वील बी लाइक चलना अंकल. तो probably we were the same. But wish you well next generation. अच्छे काम करें and wish you well Nayab. Maybe from the inside people like you joining it makes us hopeful कि कुछ तब्दीली actually आएगी unity government से. We have faith in unity government that they will show discipline. Thank you, Nayab. Thank you, Minahil. Thank you, Preh. Thank you. Thank you. Thank you guys. Take care.